Hello. Hello, I'm audible to all of you. Hello. 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 Yes. Thanks, sir. Thanks. Thank you. Thank you very much.
Respected all delegates, respected all professors, research scholar, and today's guest speaker. I warmly welcome to all the delegates, all the resource person, chairperson, and dear professors and my dear student. So very soon we are going to start our seminar. Only we are waiting for today's chairperson, Dr. Sardar Dhamija sir. So within 2 minutes we will start our seminar. So kindly be with us. Welcome, Gagandeep sir. Yes. Neeta ma'am, I am audible to you. Yes, sir. Yes, sir. Thank you very much. Thank you. Yes, yes. Yeah. Neeta ma'am, just we are waiting for the chairperson, sir, and then after that we will quickly start our. Huh? Yes. Done. Warmly welcome, Pawar sir. Please unmute yourself. Yeah, sir. Yes, sir. Thank you. नमस्कार पवार सर. नमस्कार मॅडम. नमस्कार. आपली पुस्तक आहे आमच्या ताब्यात. हो. I think Pal sir. भाजी मैं ना सेमिनार था. हेलो, मैंने एक सेमिनार था भाजी, हुक्म करो. किदों? हाँ मैं भी आना, मैं भी थोड़े को 7 बजे आऊँ. कितने बुलाया? कोई नहीं, मैं भी आना सर, थोड़े को 7 को ज्वाइन करांगा. ठीक है सर. Gagandeep sir, any have you contact with sir Dhamija sir? But he is joining within 2-3 minutes. Okay sir, okay. No issue sir, no issue. Yeah. हाँ जी सर. ओके. My sir PPT is visible. Yes.
Thank you. Thank you. AC बंद कर दो मैंने. Hello. 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 Yes. Hanji, I think Dhamija sir joined the seminar. Dhamija sir, we are audible to you. Hello. Hello. You need to unmute him. He's raising hand. Yes, yes. So I already made a co-host to Dhamija sir. Yes, sir. We are audible to you. हाँ जी भाई audible है. हाँ नहीं, you are sir, Prakash sir, you are audible to him, but his voice is not coming. I think you need to unmute him. Yeah, I already sir made the co-host to sir, so no problem for unmute. Yes sir. Okay. Yes sir. Sir, Dhamija sir, I am audible to you. Yes. Thank you sir. Thank you very much, and very warmly welcome sir for this very important and very auspicious seminar. Sir, with your permission, shall we start the seminar? Please start. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Yes, with the permission of the today's chairperson, Gurvinder Singh Dhamija, sir. So we are going to start our seminar. First of all,
myself, Dr. Prakash Masram, head of the department, University of Mumbai, organized the seminar as a part of the Azadi ka Amrit Mahotsav. And also, I am very much grateful and privileged to have a collaboration with the Punjabi Sahitya Akademi, Haryana, Government of Haryana. And within a very short period, I think Gurvinder Singh Dhamija sir accepted our collaboration and given permission to organize such a kind of the very important national seminar. And also, I am very much thankful to Jairam Pawar Saheb and Gagandeep sir for accepting our invitation as a resource person for this today's e-national seminar. So basically, sir, let me introduce just my department profile and the Guru Govinda Singh Endowment Chair. Basically, Guru Govinda Singh Endowment Chair established in the University of Mumbai, funded by Government of India and also funded by University of Mumbai. So through which, sir, we have, have been done various activity, and we have been doing the various kind of the activity, I mean to say research activity. Then also by inviting the various scholars for discussing the Sikhism and their principles. So behind that, there is a important objective is that to discuss the relevance of the Sikhism policy in the today's context in the 21st century. So for this noble work, sir, objective, we have working under this Guru Govinda Singh Endowment Chair under the University of Mumbai. Before 2-3 years, we have organized a lot of seminar with collaboration with Punjab government and Khalsa College, Mumbai University. That is the national seminar. And by inviting the various, towering personality and rich scholar from the Canada, America, and all over the India for discussing the Sikhism and the Guru Nanak Sahib philosophy and teachings, principles, and their relevance in the present context. So, and regarding my department, sir, first, my department has a very the large department in the Maharashtra, and it is the biggest department in the Maharashtra, because we have been teaching near about 96 paper at the PG level, and we have a MPhil course, PhD course, and near about the currently 15 to 16 students pursuing the PhD under the department level, Department of History, University of Mumbai. And we have a lot of legacy of the research and vibrant subject we have regarding environmental history, Sikhism, then social history, contemporary India, labor history, urban history, medicine history, then itinerant community, tribal history, art and architecture in medieval India, environmental history. So many broad area we have, sir, for in terms of the research and and various kind of the papers we teach at the MA level and the PG level. I think we have a very short period, and due to time constraint, I will stop here. But once again, I warmly welcome to all dignitaries today's seminar. Chairperson Gurvinder Singh Dhamija sir for accepting our invitation as a chairperson of today's seminar. Then I warmly welcome Jairam Pawar sir for accepting our invitation as a resource person. Then warmly welcome to Gagandeep sir, also accepting our invitation in very short period. I think with this word I will stop here. Now I would like to request our department faculty, Dr. Neeta Khandpekar, Professor, Department of History, for introducing the today's guest, resource person, chairperson of the today's seminar.
Over to Dr. Neeta Khandpekar, ma'am. Thank you, sir. Thank you so much. Good evening, one and all, and Sat Sri Akal. At the outset, I would like to congratulate our HOD, who is being given the charge of Guru Gobind Singh chair. He is convener of this program for the National E-Seminar on the role of Banjaras in Sikhism. I am very happy that all our MA Part 1, Part 2 research students and esteemed colleagues from various colleges and from the state of Punjab and Haryana scholars have joined. I would introduce the chairperson of the day today. Our chairperson for today's event is Shri Gurvinder Singh Tamija ji. उनका बहुत बड़ा बायोडाटा आज HOD सर ने मुझे दिया और पढ़कर मुझे बहुत सारी बातें अच्छी लगी सर की. धामीजा सर की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि वो सैनिक स्कूल के अलुमनस रहे हैं और इस वजह से डिसिप्लिन को काफी मानते हैं. He is very sensitive towards upbringing of girl child और उनके कार्यकाल में उन्होंने बहुत सारे girl child related friendly things issue किए. He is attached to the tenets of Banda Singh Bahadur and related to it, lot of ground level activities sir has conducted. The thing which attracted me the most as an academician was his discovery of world's largest fort Lohagarh at Bhagwanpur, Yamunanagar on the borders of Haryana and Himachal near Paonta Sahib. और इसके बाद सर ने किताब लिखी. He wrote a book Lohagarh, the world's largest fort, the capital of Sikh kingdom, published by Haryana, which is translated into, this is very important, Kannada, Marathi, Punjabi and Hindi. And two of the scholars who are the resource person today are translator of this book. The best part is students here should admire is he knows so many languages including Hindi, English, Punjabi, Nepali, Zanki, Haryanvi and Urdu. His designations has been a long list. Director Punjab Sahitya, Haryana Punjabi Sahitya Academy, जिनके साथ हम आज प्रोग्राम कोलैबोरेट कर रहे हैं. सो सर धन्यवाद, क्योंकि आपके ऑर्गेनाइजेशन का लोगो है आज के पोस्टर और हमारी यूनिवर्सिटी का लोगो है और एक कॉमन बातें हैं कि दोनों लोगों में किताब विजिबल है. तो ये भी एक कोलैबोरेशन का जॉइनिंग सिमिलैरिटी है. Sir had been chairman of Lohagarh Trust, Yamunanagar, chairman Baba Banda Singh Bahadur Heritage Development Trust, and so many other organizations. He has conducted so many yatras, Vishal Chetna March, Shahidi Yatra, Patna Sahib Darshan, Sandesh Yatra. State functions he has coordinated, especially light and sound shows in 2016 related to Baba Banda Singh Bahadur in Sikh history and on the life of and legacy of Guru Tegh Bahadur Sahib in 2022, very recently. Lot of mega state events he has organized. State functions at Lohagarh, जिस पे उन्होंने किताब लिखी है, वहीं पे state function सर ने होस्ट किया है. And सबसे अच्छी बात मुझे सर के बायोडाटा में क्या लगी कि उन्होंने अपने बायोडाटा में could not achieve ambitions लिखा है, कि वो चीज क्या चीजें नहीं कर पाए. नॉर्मली आज तक मैंने जितने बायोडाटा देखे हैं, लोग सिर्फ क्या अचीव करते हैं लिखते हैं. तो ये सर सीखने वाली बात है मेरी पर्सनली कि आपने could not achieve following things भी लिखा है. So sir, welcome as chairperson for this event. Today's first speaker I will be introducing. First speaker is Shri Jairam Sitaram Pawar ji. सबसे बड़ी बात है कि सर डिप्यूटी कलेक्टर हमारे होस्ट स्टेट से हैं, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से कार्यरत हैं. He has his education in BSc degree from Vasantrao Nayak Marathwada Agricultural University, Parbhani. Sir had also tried his hands on with MSc Agriculture in Pathology. He is presently also pursuing MA in History from Mumbai University. His administrative experience with our state has been long as an agricultural officer, Tahsildar Nanded, Tahsildar Parbhani, Tahsildar Jalna, additional chitnis, Mumbai Suburban District, Bandra Collectorate. We know that election duties always teacher gets. So Bandra Collector, we are all familiar with. Deputy Collector, Mumbai Suburban District, again Bandra Collectorate.
He has been also Deputy Collector GAD Thane and GAD Mumbai Sub District. और सबसे इम्पोर्टेंट बात मुझे सर ने 3 बुक पब्लिश की हैं पवार सर ने. लोहगढ़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फोर्ट जो धामाजी सर ने लिखी है उसका मराठी ट्रांसलेशन 2019 में सर ने किया है और मुझे अच्छे से याद है कि इसकी बहुत सारी कॉपीज सर हमारे प्रेजेंट एचओडी को डिपार्टमेंट में देके गए हैं एंड व्हिच आई आल्सो इक्वली हैव द कॉपी. थैंक यू वेरी मच सर. उन्होंने एक और किताब लिखी है हिंदी में, मालो की अखबार का अधूरा सपना 2020, और एक किताब लिख रहे हैं राजा भोज परमारों की गौरवंशीय विरासत. तो with this I welcome you Pawar sir to this seminar as a resource person. Next resource person हमारे आज के हैं गगनदीप सिंह सर. All young scholars younger than me in age, so welcome all of them. सर की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होम टाउन सर चंडीगढ़ से हैं. मास्टर इन टूरिज्म मैनेजमेंट विद बैचलर इन होटल मैनेजमेंट. हरियाणा सिविल सर्विसेज ऑफिसर से जुड़े हुए हैं सर. He joined these services in 2002. Presently, he is holding estate officer cum land acquisition collector, Haryana, and also he is attached with Joint Commissioner Municipal Corporation of Karnal. He has also acted in so many other posts: Joint Director, Information and Public Relations Department, Government of Haryana, Chief Executive Officer, Kurukshetra Development Board, Zonal Administration, etc. Presently, he is doing research on Sikh history, written book on Lohagarh Sikh state capital, जो कि हिंदी में दामाजिया सर ने सर के साथ में ट्रांसलेट की है, published by हरियाणा हिस्ट्री एंड कल्चरल एकेडमी. और शुरू में मैं सर को नोट कर रही थी कि सर इज गोइंग टू स्पीक ऑन रेवोल्यूशन ऑफ ट्रूथ एंड ह्यूमैनिटी, और कुछ 40 से ज्यादा स्लाइड्स मुझे नजर आई गगनदीप सर की. सो वेलकम यू सर फॉर दिस सेमिनार. विद दिस ओवर टू एचओडी सर. Thank you, ma'am. Thank you very much. Now, as per the protocol of the seminar, so I will hand over all the procedure for the seminar to today's chairperson, Gurvinder Singh Damija, sir. Yes, sir. Anji, Prakash ji. Anji. Prakash ji, I will request you to please conduct no issues. Okay. Thank you, please, sir. Thank you. Carry on. And one more thing, I will add one more thing. Yes, ma'am just said the Gurvinder Singh discovered Logar. I may make a correction. It is Gagandeep Singh and Jarnail Singh ji who did the 99.9 work. Only the photograph is mine. Thanks. Okay, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you. It is all teamwork. It is all teamwork. So now I think Gagandeep sir has some important official meeting. So due to that, I kindly request to Gagandeep sir, please share your view on this today's topic. Yes, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much, Prakash sir. Thank you, madam. Thank you, Chairman sir. And my today's topic, my PPT is visible on the screen, sir? Yes, it is visible. Yes. My today's topic is revolution of truth and humanity, and about 10 Nanaks, Banda Singh Bahadur and Banjara Sikhs, 1469-1716, 247 years of Sikh history. And why I wrote revolution of truth and humanity? Because we need to understand few aspects of Sikhism, because Sikhism is the youngest faith in the world, which came with the advent of Guru Nanak Sahib 550 years back. And इससे पहले जो faith थे, जैसे इस्लाम था, चाहे हिंदुज़म था, चाहे बुद्धिज्म था, चाहे क्रिश्चियनिटी थी, और चाहे जुआडिज्म है, ये सारे old faiths थे. And 550 years back, Guru Nanak Sahib, he started the concept of Sikhism, and this was a revolution of truth and humanity, because moment we start with his teachings, he only talked about truth and be humbled and treat every human being as brother and sister. So that's why my topic is like this.
And now how the coming back to the topic, how the Banjaras, they got to associate with Guru Nanak Sahib and what role they played in spread of the concept of Guru Nanak Sahib in all the parts of the globe. And this is my topic today. Guru Nanak Sahib calls Banjara as his true friend. Pehle pere rehn ke Banjariya mitra. This is written in Guru Granth Sahib. Hukam peya garwas. And he says, "O merchant friend, you have came in the vow by vow of the mother by the Lord's command." And how he starts, and he calls the Banjaras as his friends. Now, Guru Nanak, he started his mission at the age of 11, and because at the age of 11, उन्होंने अपना जो जनेऊ था, जो उनको एक पूरे घर पे एक फंक्शन किया गया, तो फंक्शन करने में उनको जनेऊ डालने का जो प्रथा शुरू हुआ, तो उन्होंने जनेऊ डालने से मना कर दिया, क्योंकि सिर्फ जो जनेऊ था वो मेल्स को पहनाया जा सकता था एंड अपर कास्ट को पहनाया जा सकता था। तो गुरु नानक साहब ने ये कह दिया कि क्योंकि मेरी माँ ने नहीं पहना, मेरी बहन ने नहीं पहना, और जो कि इसलिए क्योंकि वो भी उनकी इक्वल राइट्स है और ये कोई धर्म को प्रवेश का जो भी है सिंबल नहीं है, इसलिए मैं जनेऊ नहीं पहनूंगा। एंड देयर आफ्टर ही स्टार्टेड ट्रेवलिंग. Now here the role of the Banjaras came into being, and he started traveling in every part of the globe. He traveled to a whole of the Asia, Africa, and then he traveled to Russia, Europe, and every part of the globe he traveled and gave the message of truth. And wherever he traveled, people started following him. Now, why the role of the Banjara? It became important because in those days, the traveling was not an easy job. It was the traders and the travelers. The traders were the Banjaras, because moment you start traveling by a sea route, then also you require ship, whatsoever conventional methods was used to for traveling by ship. And even if you are traveling by land, after 10 kilometers, water is required, roads were unsafe. And these Banjaras were really good travelers, and they had a geographical knowledge. And Guru Nanak Sahib, moment he started his journey, the Banjaras, they adopted Sikhism, they embraced Sikhism, and then they traveled with and Guru Nanak Sahib traveled with them throughout the world. And the most important thing is why Banjaras, they became so important. Since आज की डेट में अगर हम देखें कि जिस आदमी को 2 या 3 लैंग्वेज आता है, तो उसको हम बोलेंगे कि ही इज वेरी इंटेलिजेंट. बट सिंस द बंजारास दे वर ट्रेवलिंग थ्रू आउट द ग्लोब, एंड आफ्टर एवरी 50 किलोमीटर द लैंग्वेज चेंजेस. एंड मोमेंट अगर आपको लोकल लैंग्वेज नहीं आता, तो यू कैन नॉट ट्रेड. एंड मोर ओवर इन दीज सर्कमस्टांसेस द बंजारास, दे वर नोइंग multi languages. Every Banjara, what I personally feel, that each Banjara at that stage of time used to know for more than 50 languages. And now the Guru Nanak Sahib also learned all the languages of the world, and then he had debate with the people throughout the world, whether they were Christian missionaries, whether they were Muslim missionaries or Hindu missionaries, and then they had the debate in their local language, and they were impressed with the teachings and the philosophy of Guru Nanak Sahib. Guru Nanak Sahib traveled with the Tanda. Now, what is Tanda? Tanda, you might have heard the word Tanda in Maharashtra also, that there are a number of Tandas. In fact, the moving Karwa, trading Karwa, it was also called Tanda. And in Gurbani, there is a shlok on Tandas. Dhate avgad dhungar gana. Yani traveling in the mountains is very difficult. Ghate avgad dhungar ghana, ek nirgun bail hamar. My oxen is not so powerful. And ek nirgun bail hamar
रमैया सो एक बेनती मेरी पूंजी रखो मरार, कहो वणजारो राम को मेरा टांडा ला दियो जाहरे, हो वणजारो राम को सहज करू व्यापार, मैं राम नाम तुम लाग्या ए पिखला की संसार, अपार पार के दानिया लिख लू आल पताल, मोहे जम डांडना लाग गई तजले सर पंजाल, जैसा रंग कुसुम का तैसा ये संसार, मेरे रमैया रंगू मजिटका कहे रविदास चमार. This is the stanzas of Bhakt Ravidas Ji Maharaj, which is present in Guru Granth Sahib. And the most important thing is that even Bhakt Kabir Sahib talks about the Tanda, and Tanda comes in Guru Granth Sahib number of times. So Tanda is an important thing. And why it is important? Now I have to talk about Tanda. Moment I started searching about Tandas, and I will take a pause over here, then I came to know that there are more than 15,000 villages and towns in India itself whose name is Tanda. Now, it is not a small thing that a uniform name or Tanda has been right from Kashmir to Kanyakumari and Gujarat to, and last point of northeast states, we find Tandas. Then I started searching in Pakistan also, we found Tandas. Then in Afghanistan, Tandas are there. Then in Iran, Iraq, even in Baghdad, around Baghdad, there are 6 Tandas. Then I went to Middle East, we found few Tandas. We found Tandas in Azerbaijan also. And the capital of Egypt, that is Cairo, it has also 5-6 Tandas in it. And then I came to know that in Africa, there are Tandas, in Europe, there are Tandas, in Russia, even in China, in Brazil, North America, we find Tandas everywhere. Even the last island near Australia, it's New Papua Guinea, we find Tanda there also. So it is very clear that the Banjara community, it was spread throughout the globally, and Guru Nanak Sahib, he traveled with them across the globe with the Banjara community. In the first journey of Guru Nanak Sahib journey is traveled into, he traveled about 80,000 kilometers. And what I personally feel, it can be more, it cannot be less than this. And in the first journey, he traveled to Punjab, Delhi, Uttar Pradesh, Bengal, Bihar, Assam, Bangladesh, and beyond Assam, Odisha, Madhya Pradesh. Second journey is in Rajasthan, Andhra Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu, Sri Lanka, Kerala, Maharashtra, Gujarat. In third, Egypt, Nepal, Sikkim, Bhutan, Tibet, China, Kashmir. In fourth journey, Sindh, Balochistan, Saudi Arab, Makkah, Medina, and to Israel, to African parts, to Russian, European, northwestern frontier province. Because when he went to Makkah, Medina, Guru Nanak Sahib, he went by ship, and when he came back, he came by land route, and it's very difficult to cross the Middle East by land route, and without the help of Banjaras, it is not possible to travel on that land route. So at Guru Nanak Sahib stayed at Makkah, Medina for about 6 months, and he stayed at Kaaba. The place is Kaaba, where the Muslim people, they go for Hajj. And the head Qazi of Makkah, Medina, he quitted Muslim religion and he embraced Sikhism after meeting Guru Nanak Sahib. The name of the head Qazi is by Rukmuddin. And when the Guru Nanak Sahib, he came back, and then the person named Rukmuddin, who became Sikh, he was executed, he was martyred by the fanatics Muslims over there at the Kaaba. And then he went to, Guru Nanak Sahib went to Jerusalem. Now, Jerusalem is a very important place because it's the birthplace of this thing, 3 faiths, that is Christianity, Judaism, and Muslim faith. And Guru Nanak Sahib, he went along with Baba Farid, and he established a dharamsala over there, which is still existing. Whenever you go to Jerusalem, there is a place called Indian Hospice, and you go over there, these dharamsal, and this nameplate is present over there. Hazrat Baba Farid Shakarganj, he is the Bani of Baba Farid, is present in Guru Granth Sahib.
फरीदा काले मेंढे कपड़े काला मेंढा वेश न्याय करया मैं फिरा लोक and दरवेश. This is the Bani of Baba Farid present in Guru Granth Sahib. And then Guru Nanak Sahib, he went to Europe. In Egypt, the Guru Nanak Sahib, first I should tell about the Egypt. In Egypt, Guru Nanak Sahib met Shah Salim first, who was Ottoman Empire ruler at that emperor of Ottoman Empire. He also embraced Sikhism as per the records available. And the mentor of the Shah Salim first, he was Pir Jalaluddin. He also embraced Sikhism, and not only he embraced Sikhism, he traveled with Guru Nanak Sahib and he came to India and he got settled in Kurukshetra, the present Kurukshetra, and his tomb is still present in Kurukshetra. Whenever you visit, you can see all the Sufi saints, particularly of Chishti and Qadri movement. The Chishti movement, it was run from particularly from Egypt and from Kaaba, and the Qadri movement, the epicenter was in Baghdad. Both the peers, both the movement heads, they embraced Sikhism and they started moving towards India after meeting Guru Nanak Sahib. That I will narrate the history later on. And Guru Nanak Sahib, he went to South India also. And in the South India, these are the Banjaras, because Masand is a term which is used for a preacher. And even if you go to Himachal Pradesh, Kashmir, you will find the people whose surname is as Masand. The Masands were designated by Guru Nanak Sahib to preach the philosophy of Guru Nanak mission. And Hari Masand is the person who is mainly associated with, who got associated with Guru Nanak Sahib. He was the main preacher in South India. And then Hema Masand, Pema Masand, Linga Masand, Deepa Masand, Namana Masand, Soma Masand, Malcha Masand, Thepa Masand, Loka Masand, Karsana Masand are the few Masands of South India, including Maharashtra, who preached Sikhism in the parts of Maharashtra, in Karnataka, in Telangana, in Andhra Pradesh, up to Kerala. These people were working. And when the Guru Nanak Sahib, he went to Sri Lanka, and Sri Lanka का जो राजा था उसका नाम था शिवनाथ, जो कंटेम्परेरी उसका उस टाइम का राजा था. एंड अभी तक गुरु नानक साहब श्रीलंका पहुंचे नहीं थे, तो देयर वाज अ ट्रेडर कॉल्ड मनसुख वंजारा. तो व्हेन हिज शिप embarked on sea shores of Sri Lanka, and Shivnath and Mansukh Vanjara were very good friend. And वहां पर होता क्या था कि मनसुख का जब जहाज श्रीलंका के साथ लगा समुद्री बेड़ा, तो उसके बाद मनसुख पीपल जो बंजारास थे, they started cooking the food. And the Shivnath ने कहा जी कि today the fast is observed in Singla Deep, because उस टाइम श्रीलंका का जो नाम था वो सिंगला द्वीप था. तो वो बोले कि सिंगला द्वीप में आज फास्ट ऑब्जर्व होता है, and nobody has the food on this particular day. So Mansukh Vanjara, because already he embraced Sikhism, he says the food is given by the true God, and he's our father and mother. And if we sleep hungry without eating the food, our Father who has granted us the food, he will not be happy. He will be disappointed from our activity. And not eating has nothing to do with the finding of God. And accordingly, there was a debate between Mansukh Vanjara and Raja Shivnath of Sri Lanka on the pursuance of Mansukh Vanjara. He embraced Sikhism, and thereafter Guru Nanak Sahib also met Raja Shivnath. Thereafter, there was a very rich trader of Kashmir. His name was Savar Mal Vanjara. And why he is so important, because at that time, when a taxpayer, for example, we can presently consider a very rich taxpayer
super elite class जो आज के अगर हम compare करेंगे, so when they used to pay the taxes to the government, so they can put a one flag on their house. They are a rich person and they have paid lot of tax to the government and they have the authority to put a flag. And when Guru Nanak Sahib went to Kashmir, on the house of Savanwal Banjara, there were 5 flags and there was no other person in India who had the authority to put the 5 flags on his house because he was such a rich person. And after meeting Savanwal Banjara, he also embraced Sikhism, and he's the great grandfather of Bhai Makhan Shah Labana. And Bhai Makhan Shah Labana, because Labana and Banjaras are one and the same thing. And these people, after meeting Guru Nanak Sahib, they shifted their base in Karnataka and thereafter in European and African countries, and they became the main preachers of Sikhism in the area of, particularly in the whole of the African continent. And Savanwal was the contemporary of Guru Nanak Sahib. Fourth Nanak's contemporary, Bhai Azadi, he was the main son of Africa. And Bhai Makhan Shah Labana, he was born in Hampi, Karnataka. He was close associated of 7th, 8th, 9th, and 10th Nanak. Now, how Bhai Makhan Shah Labana he became popular and important, because there was some confusions when Gurda Gati was given to 9th Nanak Guru Tegh Bahadur Sahib. Some anti-social elements, they created confusions, and these confusions were removed by Makhan Shah Labana, and he says that the 9th he is the true Guru, and whole of the Sikh community agreed to him, and Guru Tegh Bahadur Ji further proceeded with the Guru Nanak Sahib's mission. The royal families of Banjaras. How I say is royal families of Banjaras. Now, we need to know about the history of Banjaras, because we have treated Banjaras as very poor people who don't have anything, resources. So far, we have treated them like that. But they have been ruling the country for a long time. I talk about Rathod family. Now, how this Rathod family, it becomes important. In 5th AD, Raja Hatiya, he used to rule whole of the northern India, and his capital, because earlier the capital was in 5th century, it was not Delhi, it was not Lahore, it was Kannauj, which is situated in Uttar Pradesh. And the person controlling Kannauj used to control major part of the Indian subcontinent. So Raja Hatiya of Rathod Banjara family used to rule over here. And after the attack of Sahabuddin Gauri, this rule ended, and this family shifted to Gujarat and Maharashtra. Now, the descendant of this family, Bhai Lakha Rathod, he got it associated with Guru Nanak Sahib. Now, how Lakha Rathod he got important with Maharashtra and particularly Bombay, because the Lohgad Bombay, Lohgad just situated near the Bombay, was constructed by this family. And when I went to the records, I came to know that this was the main family which was who constructed it. And during the time of Shah Jahan, this family descended Uday Bhan Rathod. It is written in Nobility of Mughal Empire by M. Author Ali. Uday Bhan Rathod, he was 4,000 Mansabdar of this fort just before the advent of Shivaji Maharaj. And then I come to Chauhan family. Chauhan family, it was in 5th BC. Now I'm talking about 5th BC. They used to rule our Indian subcontinent, and Raja Sthavana Banjara Ashtarpura was the king, and the contemporary, the descendant of this family, who was contemporary to Guru Nanak Sahib, Uday Karan Chauhan, he became sick and he got associated with Guru Nanak Sahib. And now coming to the most important family from
Pawar family, or Jairam Pawarji also comes from that family. And this family directly got associated with Raja Bhoj. And we have heard a very important idiom, Kaha Raja Bhoj, Kaha Gangu Teli. So he was one of the richest Raja in the world. And his descendant, Pai Lakhman, Pai Radhe, they got associated with Guru Nanak Sahib. And after Muslim rule, these people, they shifted their places somewhere in Himachal Pradesh, and some of them came to Maharashtra, and they got scattered in the different parts of Indian subcontinent. And they were very rich people, and they used to, even although even in the Muslim rule, they were not controlling the political power, but they had a very big say in the political scenario in those days. And today, even 25 villages on the name of Raja Bhoj exists in Lohgarh, sixth state capital, established by Banda Singh Bahadur. Still, भोजराज के नाम से 25 गांव आज भी एग्जिस्ट करते हैं जिनका नाम भोजराज से है, एंड आई विल टेल लेटर ऑन डिटेल्स. Similarly, a Yadav Banjara family, which was particularly Naik Thakur, was the main person who got associated with Guru Nanak Sahib, and the person who became very rich and very popular in the Sikh history, in the Banjara history, was Pai Lakhi Rai Banjara. And why he became important, there is another slide also. Pai Lakhi Shah Banjara is the contemporary of 6th, 7th, 8th, 9th Guru and Guru Sahib. And Lakhi Rai Banjara was one of the richest person of the Indian subcontinent at that stage of time. And he had a very, important place in the Mughal royal courts also. And even presently, in my book, I have mentioned that in Delhi, about 1,700 acres of land still exist on his name in Delhi itself, in the center of Delhi. That is Raisina Hills, where we call Lutean Zone, where all the Indian, all the जो हमारा President's house है, Prime Minister house है, all the important bureaucracy lives over there in Raisina Hills. It's all on the name of Lakhi Shah Banjara. Presently, land is named of Lakhi Shah Banjara. India Gate's land is on the name of Lakhi Shah Banjara. Malcha, where all the embassies are situated in Delhi. All the land is Malcha, and one place is more Barakhamba. All these villages are still on the name of Lakhi Shah Banjara. He was a rich person. And then there is Tomar family. Tomars, they have also ruled the Indian subcontinent, particularly Delhi. And Pai Makkan Shah Lubana is a descendant of that family. And Tomar family, it became internationally popular. And even if you search on internet, you will find that 30% of the Egypt's population are Lubanas, although they are presently Muslims. But at one stage of time, they were Sikhs. And when you will search, you will find that Lake Lubana, Russia's largest lake, is on the name of this family. Though these people, they have controlled the globally, and they were elite people. And most important thing, these Banjaras, they never adopted unethical practices in their trades after meeting Guru Nanak Sahib. And they worked for the humanity, and this never happened. And presently, it's also not happening that the elite classes of the world, they even don't work for the humanity, even these days also. But at that particular time, these 5 families, after embracing Sikhism, they adopted the ethical practices. They worked for the humanity. There was no discrimination on the basis of race, on the basis of language, on the basis of color, on the basis of caste, on the basis of creed. They treated every human being as one, and they say that ये सब खुदा के बंदे हैं और उस खुदा ने ही इसको बनाया है.
second Guru Nanak Sahib, because second Guru Nanak Sahib's name is Guru Angad Sahib, and he remained on Gurda Gaddi from 1539 to 1552. He said, "Vast le vanjariya vakhar bade paye, kai laha le gaye, ik challe mool gawaye." The Banjaras have purchased their merchandise and packed up their cargo. Some departed after earning good profit, while others leave and have lost their investment altogether. It's present in Guru Granth Sahib, page 1237. Now it has other philosophical meaning from religious perspective. He says, यहाँ पे जिन बंजारों ने अच्छा काम किया, जो भगवान ने उनके साथ मूल लगा के भेजा था, they have earned a good profit, ठीक है, and some have whatever the God has granted them good things when they took the birth, and उन्होंने जीवन में बुरा काम किया तो उन्होंने वो भी जो परमात्मा के साथ थोड़ा बहुत धन लगा के बेचा था वो भी उन्होंने लूज कर दिया. The meaning goes like this. So there are two meanings in this regard. One is worldly meaning rightly, and one is the philosophical meaning of Guru Nanak Sahib's philosophy. The Banjaras who got closely associated with the second Nanak, Pai Nathu, he was from Nathu, he was from Rathod family. Pai Rao, Pawar family. Pai Ranmal from Rathod family. Pai Udaykaran from Chauhan. Naik Thakur from Yadav family. Pai Lakha, Pai Mohan were some of the close associates of second Nanak. Guru Ramdas Ji became third Nanak 1552-1574, and he established his headquarters because Guru Nanak Sahib, he established his headquarters at Nankana Sahib. Second Nanak, he established his headquarters at Kadur Sahib, and third Nanak, Guru Amardas Ji, he established his headquarters at Gobindwal. And Sacha Sahu, Sache Banjare, true is the banker, true is the trader. I go by the worldly meanings, and it's present in Guru Granth Sahib 117 on 117 page. Even Akbar goes to pay obedience to the third Nanak, and even Humayun, the son of Babar, because Babar, he attacked India, and there was no other person to stop him. And Guru Nanak Sahib, he tried to stop Babar, and Babar put the Guru Nanak Sahib in the jail. He imprisoned him, and but later on there were lot of people. बहुत सारे लोगों को उन्होंने जैसे जेल में बंद कर रखा था, who were demoralized, and Guru Nanak Sahib जो उनका मोराल था, जो prisoners का, उसको सबको boost किया. And there was revolt in the jail, and the Babar has to release Guru Nanak Sahib. And the son of Babar, Humayun, he went to second Nanak, Guru Angad Sahib, for the help. That clearly shows that during time of Guru Nanak Sahib, there was lot of political power, and the religious power and the social powers were gained by the Sikhism, and the new faith went throughout the world. Next is the Banjaras who got closely associated with the third Nanak is Bhai Bhoj, he is from Rathod. Pai Mula Pawar, Pai Uday, Pai Amiya, Pai Godu, Pai Lakha, Pai Pikha, Pai Mohan. These were close associates of third Guru Nanak Sahib. It was Guru Amardas Ji. And fourth Nanak is Guru Amardas Ji. He established his headquarters at, presently we called it as Golden Temple Darbar Sahib. And the original name of this place is Ramdas Nagar, Guru Da Chak Ramdas Nagar. And he shifted his headquarters from Govindwal to this place. And what he says about Vanjariana. Vanjare Sikh on de. Now he says Vanjare Sikh on de Shabd Lagavan Har.
Vanjare Sikh Amde Shabd Lagavan Har. Now the word Sikhs, it's been used by the Banjaras in Guru Granth Sahib by the 4th Nanak. This shlok is present in Guru Granth Sahib, page 313. And Guru Sahib invited merchants, artisans from different parts of the country to settle them at Amritsar. 52 trading centers were established at Amritsar, and Banjara's Sikhs, they played a significant role for establishing a new trade center at Amritsar. Now this Amritsar became economic capital of North India. And the important thing is that the Lahore, which is about only 40 kilometers away from Amritsar, which was earlier a very important town, and the economic, from the economic perspective, it's slowly started losing its glory, and Amritsar started flourishing. And this was the reason that why the Mughal emperors, they started the persecutions and the executions and the martyrs of the Guru Nanak's 5th Guru Nanak Sahib, that is Guru Arjan Pasha. And Pai, now the closely associated Banjaras with 4th Nanak and Guru Ramdas Ji is Pai Mandan. Now he is a very important character, Pai Mandan. Pai Mandan is son of Pai Uday Bhan Gaur, who is the Mansabdar over at Lohgarh, Maharashtra. Pai Prema, Pai Rupa, Pai Koladas, Pai Godu Banjara, Pai Lakha Rathod. Now this is Lakha Rathod is different. Earlier, because generations have changed. Pai Pikha, he is from Yadav family. Pai Naik Karan Chand. These were the people, these are the Banjaras who got associated, who were working, who were very rich people working on the mission of Guru Nanak Sahib during the time frame of 4th Nanak, Guru Ramdas Ji. Guru Arjan Sahib, 5th Nanak, he established another town, Taran Taran in Punjab, and his Guruship period is 1574-1606. In 1606, Jahangir felt a threat, a political threat, economic threat from the Guru Arjan Pasha, because his son, Jahangir's son Khusro, he became a close associate of Guru Arjan Sahib, and he took Ashirwad from Guru Arjan Sahib, and he raised a revolt against his father atrocity Jahangir, and gradually Guru Arjan Sahib, he was captured and he was executed, he was martyred at Lahore. And what the 5th Nanak Guru Arjan Pasha, he says about Banjaras, he says, Banjare Sant Nanaka Prabhsha Amita. Now here they called Banjaras as saint. Now earlier Guru Nanak Sahib, 4th Nanak Sahib was saying, Banjare Sikh on the Shabd Lagavan Har. Banjaras were called Sikhs. And 5th Guru Sahib, Guru Arjan Sahib, he says, Banjare Sant Nanaka Prabh Shamita. Banjaras, the saints are the traders. O Nanak, the infinite Lord is the banker. Guru Granth Sahib, page 399, about this thing. Then 5th Guru Sahib, he wrote a Banjara Pothi. This Banjara Pothi is very important because first Gurbani is written by Vara likhiyan hui hai, and thereafter in Banjara Pothi there is description and formulas and the process of formation of canon, the world's, how to make the world's best canon. It's written in this Banjara Pothi. Presently this manuscript is in Javadri Taksar, Ludhiana, and this script tells that how to the Guru Sahib in Banjara Pothi writes about the process of canon making, and it's very clear that the Banjaras, they have started the militarizations on the process how to make the best weapons in the world, and all this process has stopped. And this
this book has been published by Oxford, and the name of the book is Life and the Work of Guru Arjan by Peshwara Singh. And Guru Arjan Pasha, he was martyred on the orders of Jahangir in 1606, and his son Guru Hargobind Sahib, he embraced. He became Guru, and he became the sixth Nanak at the age of 11. And just imagine that at the age of 12, he was imprisoned in the political prison of Gwalior Fort for 12 years. And for 12 years, now how the Banjaras, they become really important, because Mughals, they had 3 political jails. One was at Ranthambore. The main political jail was as Gwalior, and other was Rohtas Fort, which is present in Pakistan. Whosoever Raja, whosoever political person who disagrees with the Mughals, they used to keep those persons in these forts, and because these persons were the main, they can cause main threat, or they have a potential threat against the Mughal Empire. And now, who used to take care of these prisoners? Who was a jailer of this prisoner? Just imagine, the jailer of this prisoner is Hari Das Banjara. He is the cousin of Lakhi Shah Banjara. He is also Sikh. Now we need to understand that Banjaras, they had a very important role, very important positions in the Mughal administrations. This is a slide, although Dr. Narayan Bhonsle ji, we had a debate over it, but anyhow, if some corrections are there, we'll make later on. And Samrat Ramdas, maybe mentor of Shivaji Maharaj, but it's written in Punjabi manuscripts. Anyhow, if some correction is there, we'll make it. And in 1630, he meets at Gadwal with the 6th Guru Sahib. This is the painting, and Bhai Lakhi Shah Banjara is present in the meeting, and strategies were made how to uproot the Mughal Empire. Now, 6 battles have started with the Mughals. After the martyrdom of Guru Arjan Pasha, 6, the military was ready, cannons were ready, army was ready, and the 6th Nanak Guru Hargobind Sahib, he fought 4 battles with the Mughals. He won all the 4 battles, and first battle took place in 1621. I have written wrong date over there. So the first person who got martyred in that battle, he was Nanu Shah Banjara. Nanu Shah Banjara was the first Sikh general who got martyred in this battle. Bhai Ballu ji, Bhai Jairam Pawar ji, he has already written a book on Bhai Ballu ji. Bhai Ballu ji was such a powerful person. Whenever he used to meet Akbar, तो अकबर अपना जो सिंहासन था, जब भी वो भाई बल्लू जी मिलने जाते थे तो वो अपना उनकी चेयर, उनका सिंहासन अपने साथ बराबर में लगाता था. तो भाई बल्लू जी was so important. So भाई बल्लू जी, he was next Sikh general who attained martyred in 1634 against the Mughals. Bhai Nathia ji, they are from Pawar family. Bhai Madho ji, Bhai Sula ji, similarly from the Thod family. Bhai Tudda, Bhai Sukhiya, Fateh Chand, Jaggu, and Chauhan family, Bhai Krishan, they attained martyred. And at the age of 49, 6th Guru Sahib died, and in Punjabi we say Jyoti Jo Samana, in Gurmukhi we say Jyoti Jo Samana. Lekin there is no facts how he died.
what is the reason of death? It's not known. Anyhow, it's a matter of research. Seventh Nanak, Guru Har Rai Sahib. When the battle of succession started between Aurangzeb and Dara Shikoh, to seventh Nanak Guru Har Rai Sahib, he rendered help of 10,000 soldiers to Dara Shikoh for becoming emperor. Although Dara Shikoh failed to execute the whole plan, but Sikhs and the Banjaras, they were helping Dara Shikoh a lot against the Aurangzeb. But anyhow, plan failed, and situation, all the total political scenario of the country changed. On the main Banjara associated with the seventh Nanak was Pai Maidas. He was father of Pai Mani Singh Pawar family, Pai Dyala Das, Pai Mani Singh, Pai Hati Chand, Pai Lakhi Rai Banjara, Pai Nagaya Singh, Pai Jawahar Singh, Pai Makhan Shah Labana, Pai Dariya, Pai Sohan Chand, Pai Lenu, Pai Uday, Pai Sangat Rai, Pai Halumant Rai. These were the main people who were associated with seventh Nanak. They were very rich people, and they had influential over all the persons, all the important lead persons of the world. And Guru Har Krishan Sahib, I'm just giving a brief introduction of these persons, because if I started explaining each slide, it will take a lot of time, and we can have a separate discussion over it. And Guru Har Krishan Sahib became Guru at the age of 11, and Aurangzeb invited him to Delhi, and where I personally feel that although history says कि उनको चेचक की बीमारी होगी, it's a contagious disease, and he was also, what I personally feel, martyred, because Aurangzeb was feeling threat at the age of 14. And the Banjaras who were associated was Pai Mani Singh Hatiya, Pai Makhan Shah, Pai Lenu, Pai Uday, because age is less, so the same Banjaras are continuing. And Makhan, this is the picture of Pai Makhan Shah Labana when after the Jyoti Jot Samana of the 8th Nanak Guru Har Krishan Sahib, the Guru Tegh Bahadur Ji, when he took Guruship, and 9th Nanak, there was some confusions. He removed the confusions. But it is not a simple thing. The confusions were moved, because Sikhism was a very powerful faith, and the Sikhs will only trust a person who is very much near to Guru Ghar, and who is having every authority from the Guru Ghar, and his words were taken, and all the Sikhs removed the confusion in contest of the 9th Guru Sahib, Tegh Bahadur Ji. Guru Tegh Bahadur Ji, 9th Nanak, he was the grandfather of 8th Nanak anyhow, because he was working on the mission of Lohgarh. Parallelly, the world's largest fort, which Madam Nita, Dr. Nita spoke about, and this fort was also, the construction of this fort was also going on. And the 9th Nanak was arrested 3 times on the order of the Emperor Aurangzeb in 1665, 1670, and 1675. And Parsha Burani source, Persian imperial Persian returns, it says that the 9th Nanak, Guru Tegh Bahadur Ji, had army of 30,000 soldiers, and most of them were Banjara Sikhs. And 9th Nanak was martyred by beheading in Delhi on the orders at Chandni Chowk in 1675 on the orders of Aurangzeb. Still the Sikh gurus never declared war against the Mughals, because the philosophy of Guru Nanak, it stands on the peace. It doesn't stand on the war. But to restore the peace, war sometimes becomes necessity. Now, Pai Dyala Das was the person before the martyrdom of Guru Tegh Bahadur Ji. Pai Dyala Das was martyred. Pai Dyala Das is the elder brother, is from Pawar Banjara, and he is the elder brother of Pai Mani Singh, born in 1642. And his grandfather was Pai
Balluji, a close associate of 6th Guru Hargobind Sahib, who also embraced martyrdom, fighting against the Mughals. And basically, when Guru Tegh Bahadur Ji, he went to Assam and Middle East and other parts of the globe for 4 years. A Hukamnama was given by the Guru Tegh Bahadur Ji to the Sangat, and just we can say a power of attorney side of Hukamnama was there. Pai Dyala Das kahe Sangat Guru ka Hukam kar manyo. Whenever moment the Guru Sahib was not present, so Pai Dyala Das was given the charge to look after the Sikh Sangat. Whatever Pai Dyala Das says, the Sangat should accept it as Guru's command, and this Hukamnamas have been published by Guru Nanak Dev University, Amritsar. First, when the martyrdom of Guru Tegh Bahadur started, so first in the first picture, it is Pai Dyala Das, then Pai Mati Das, then Sati Das. Now, what is really important of this thing? Yeah, एक पंजाब में कहावत है, ना 3 में ना 13 में. Now, what is this thing? When I went after this phrase, idiom, so उसमें कहते हैं ना आदमी ये 3 में है ना 13 में है. 13 apostles वो थे जब जीसस क्राइस्ट को सूली चढ़ा के मार्टर करने लगे, तो 13 के 13 apostles वहां से भाग गए. जब यहूदियों ने अपना जीसस क्राइस्ट को सूली चढ़ाया, तो उसके बाद वो 13 के 13 apostles भाग गए. 3 लोग ये थे जिन्होंने जब औरंगजेब के ऑर्डर्स में मुगल्स ने कहा कि आप ईन कबूल करो, अदरवाइज यू विल बी मार्टर्ड, तो इन तीनों का यही आंसर था कि अगर हम अपना रिलीजन चेंज करते हैं, फेथ चेंज करते हैं, तो हमें मौत नहीं आएगी. तो वो गलत, मौत तो आएगी. इसलिए पाई दयाला दास को उबलते हुए पानी में डाला गया और पाई मती दास को विच आरे से बीच में 2 टुकड़े कर दिए गए और पाई सती दास के चारों तरफ से अपना रून लगा के और कॉटन लगा के उनको जिंदा आग लगा दी गई. And they were brutally martyred by the Mughals at Chandni Chowk before Red Fort. And after the martyrdom of Guru Tegh Bahadur Sahib, Lakhi Shah Banjara, at the age of 95, just see, at the age of 95, he planned, and the Kotwala of Delhi, Abdul Khwaja, he also quitted his job, and he also came with Lakhi Shah Banjara, and all the Banjaras, they got scattered. They took the trunk of Guru Tegh Bahadur Ji, they gave the head to Pai Jeta Ji, and later on he became Pai Jaljeevan Singh, and Pai Jeta Ji took the head of Guru Sahib to Nandpur Sahib, and Lakhi Shah Banjara, with all due grace, उन्होंने उनका संस्कार किया दिल्ली में, जहां आज की डेट में रकाबगंज गुरुद्वारा साहिब प्रेजेंट है. And then then after the 10th Guru took the charge, Guru Gobind Singh Maharaj, whose chair is present in your university, sir. इनमें से जब compilation शुरू करी final, because 9th Guru Sahib के श्लोक इसमें इनकलकेट किए जाने थे, और उसके बाद जो कंपाइलेशन का काम शुरू किया 10th गुरु साहब ने, वो सारे कंपाइलेशन में एसोसिएट बने भाई मनी सिंह बंजारा जी, जो कि पवार फैमिली से आते हैं, एंड दे प्लेड ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन दिस होल प्रोसेस. नाउ एडवेंट ऑफ खालसा पंथ, बिकॉज इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हैज टू बी देयर. उसमें से खालसा पंथ में द बंजारास वर द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने अमृत छकिया, और छकने के बाद फिर उन्होंने अपना खालसा पंथ एंट्री की थी. 80,000 बंजारास on the hukam of Guru Sahib, they embraced Khalsa Panth. And this is the picture of Pai Vichittar Singh, son of Pai Mani Singh. And when the Mughals, they attacked Anandpur Sahib, and with his Nagani Barcha, he killed the elephant of the Mughal, and which Banjaras were such a wonderful fighter.
This event is of 1705. And now Sikhism, it talks about the equality of women. It's the first faith in the world which talks about the equality that women is, in fact, it says the women is more superior to male. And there's a shlok of Guru Nanak Sahib, the Pand Jammi hai. Pand is औरत को Pand बोल रहे हैं, Pand Jammi hai. मतलब now the women is born. Pand Jammi hai, Pand Nimmi hai, Pand ho vyao. So the women you get married. Pando hove dosti. You make friendship with the women. Pando challe rao. Sara जीवन आपका उसके साथ चलता है. Pand मुआ. If the women dies, Pand पाल लिए. मतलब फिर then you find another woman because you need a companion. Pand hoye bandan. मतलब you are bonded with women. So क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजा. Then why you call bad about women who has given birth to the kings? Because जो राजा का जो मतलब राजा को जो उस टाइम उपाधि थी वो भगवान की उपाधि मिलती थी. जिसने मतलब राजाओं को पैदा कर दिया उसको हम मतलब बुरा भला कहते हैं, कमजोर कहते हैं, किसी कैटेगरी सोशल स्टेटस में नहीं मान रहे थे. तो गुरु नानक साहब ने कहा कि उसको बुरा नहीं कह, सो क्यों मंदा किए जित जम्मेरा. जिन्हें राजाओं को पैदा करती है उसको आप मंदा नहीं कह सकते, बुरा नहीं कह सकते. तो साचा साहिन बंजारा was the first chief missionary appointed by the third Guru Nanak Sahib, and Lady Sikh General Bibi Pikha Kaur Banjaran, and she was the first Sikh general, wife of Pai Amal Singh Banjara, who embraced martyrdom fighting against the Mughals in the battle 1705. And there were thousands of Banjara women who fought against the Mughals, whose names doesn't come in the history, only to restore the human values. Now, what is important? What is the important over here? Why I talk about the humanity? Because Banjaras, they were already very rich. They were controlling the resources. Now, what next? Next was the truth and the restoration of human values, and to stop the atrocities of the monarchs existed. We don't only talk about the monarchy of the Mughals. I talk about every monarchy which was existing in the globe, because it was not working for the humanity. It was working it was doing anti-human activities. It was a mission against the anti-human activities, and not to control any resources, not to control any land. The fight was only for the humanity. Now, Guru Gobind Singh, he fought about 16 battles, and these are the list of the Banjara families, Banjaras, who embraced martyrdom, fighting against the Mughals with Guru Gobind Singh Maharaj. And Pawar Hatiya Chand, he embraced martyrdom in 1688 in the battle of Mahotsav, Phagani. Sohan Chand, Lehnu, Hatiya Chand, Sohan Chand, Lehnu, Kalyan Singh, Bhagwan Singh, Nan Singh. Because Singh word, after it comes, they have embraced Sikhism. They came into Khalsa Panth. They were already Sikhs. And Bagh Singh, Sukha Singh, Alam Singh, Mathra Singh, Gokul Singh, Uday Singh, and all this data I have derived from the Patwais, and because the Pats, they were noting down the record of the martyrs, because it was no other historian was noting down, but fortunately these Patwais are present in Punjabi University, Patiala, and the manuscripts are available from where this data is available. They were very rich people, and they only fought not for any land, not for women, not for controlling any capital. They only fought for the cause of humanity. And Lakhi Shah Banjara's also two sons, by Jawar Singh and by Hema Singh, and later by Nagaiya Singh, they also embraced martyrdom, fighting against the Mughals.
Now this man becomes important. Why I have to show you this slide. He's Pir Buddhu Shah of Sodora. And now how his history becomes important. Sodora is just 20 kilometers away from Logar, 6 state capital. When I started searching about doing some record about Pir Buddhu Shah, I was astonished. Who is Pir Buddhu Shah? And being a Muslim, why he laid down his life for Guru Gobind Singh Maharaj? Because this was not a question of Muslim, Sikhs or Hindu. It was the question of truth only. And the fight was between Dharam and Adharam. Nothing more than that. And when I just search about the history, it is so astonishing. You cannot just think, because moment Guru Gobind Singh Maharaj, he went to Sodora after the battle of Pangani and moving towards Nandpur Sahib. So Pir Buddhu Shah, he presented him a sword. Sword was sent by Muhammad Khalifa IV, Rome, Italy. And this weapon is presently present at Nandpur Sahib. And you just imagine that a weapon from Ottoman Empire, descended of Ottoman Empire, comes to Sodora to Pir Buddhu Shah, and he keeps on the feet of Guru Gobind Singh. And the weapon is of Muhammad Khalifa IV, Italy. Now, Khalifas are not small people. They are directly descendants of Muhammad Sahib, and they are the ruler of the European nations also. And I was astonished, and then I studied about Pir Buddhu Shah. Then I came to know that Pir Buddhu Shah, he also embraced martyrdom. His sons also embraced martyrdom, and his father also embraced martyrdom, fighting against some Mughals. And when I studied, I came to know that Abdul Wahib, Shah Abdul Wahib, Qutbu-ul, he is the person who came from Kaaba after Guru Nanak Sahib. And if you see his lineage directly goes after he is the descendant of Fatima bint and Hazrat Ali. Fatima bint is the daughter of Muhammad Sahib, Hazrat Muhammad Mustafa, the Holy Prophet Islam. Now we have to understand that even the descendants of Muhammad Sahib, I'm not exaggerating anyhow, and I'm not even hurting somebody's feeling, but the descendants of Muhammad Sahib, they also moved after Guru Nanak, and now they were the kings, they were the political and the religious leaders. Then why they attained martyrdom? Not for any personal gain, only for the gain of truth, only for the humanity. This was a revolution. That's why my presentation is about revolution. That how, and even it, Banda Singh Bahadur, who declared Logar as capital and captured all of the northern India. There were 5,000 Muslim soldiers from this family who accompanied him. And this was the Sayyid family, who were the blood of Muhammad Sahib, who worked on the mission of Guru Nanak Sahib for the truth and for the humanity. And this is unmatched example. No other example in the world matches him. He is Pai Nagaya Singh. He is the son of Pai Lakhi Shah Banjara. Now, Banda Singh Bahadur, he starts his journey from Nanded, Maharashtra to Punjab. Meanwhile, he is on the journey. In June 1709, the Amritsar was under the control of Mughals, and the Mughal General Harsrai, he was having control of Amritsar. And Pai Nagaya Singh, age 98 years old. It is a record of eyewitness Patwai. And he attacked the Mughal forces and Amritsar ko wahan se mukt karaya, and he killed the Mughal general Harsrai, and he also attained martyrdom.
fighting against the Mughals at Amritsar, sitting on a horse. And there is no example in the world that 98 years a human being sits on a horse and kills the most powerful army general, because Mughals were the most powerful people of the world, or unki general ko maar ke, and he also embraced Sikhism. And then there is a shlok in Gurbani also for such kind of persons. Gurmukh kade budde nahi, jin antar surt gyan. The Gurmukh never grow old within them in the intuition and understanding and spiritual wisdom. And Guru Granth Sahib, page 1418, talks, give details of this shlok, and this is how it goes on. This is about some slides about Logar and how the fortification were done to uproot the Mughal Empire. The Banjaras were sporting, and Banda Singh Bahadur established the sovereignty. These are the forts, remnants of the fort, which are scattered in the 5 districts, right? Because Mughals, if we have to uproot the Mughals, these people first studied the Mughal war strategies, then they built the forts in such a long area that, because the Mughal strategy was वो घेरा डालते थे, घेरा डालने का supplies को cut करते थे, and these forts were scattered in so long area that the supplies cannot be cut, and gradually the Mughal were facing scarcity of resources, the supplies, because the Banjaras were the person who used to make supplies to the Mughal army. And in this case, now all the Banjaras, they became soldiers and they fought against the Mughals. And even the Persian return says that agar 2 rupees ki dal bhi 100 rupees kilo us time Mughal camp mein bik rahi thi. It was the things, so much inflation in the Mughal camps due to Banjara not making supplies to the Mughals. And now, with lot of responsibility, I want to state that this is the only cause of decline of mighty Mughal Empire. There is no other reason. There is no other reason. And Bhoj Raj, now there are 25 villages on the name of Raja Bhoj. And the name of the villages is Bhojraj, Bhojponta, Bhojpur, Bhoj Tripta, Bhoj Kudna, Bhoj Natia, Bhoj Kotia, Bhoj Mator. Even we find Tandas on the name of Bhoj, Bhoj Nakkal, Bhoj Pansara. And these archaeological evidences give lot of, speaks lot of things, that how the Banjaras, they were so rich people. And now the Banda Singh Bahadur general, he starts his journey from Nanded, Maharashtra. He comes to Punjab, and one more person, one more saint, one more. We have great, he's our guru. We have great regards from him. Bhagat Namdev ji, he also moves from Hangoli, Maharashtra to Gurdaspur, and Banda Singh Bahadur was also captured at Gurdaspur. All these people, they came from Maharashtra, because our seminar is being conducted by Bombay University, because the land of Maharashtra is also land of Veers and all the brave people, and who have contributed a lot for the past number of centuries, and they have supported the Sikhism in different contests to accomplish the mission of Guru Nanak Sahib. And these are the persons, these are the same Banjara lineage, Pawar, Rathod and Chauhan families who embraced martyrdom. And they were the main generals of Banda Singh Bahadur. They are the main persons who operated. They are not small people, what I want to say. For example, Pawar's family, this Bhagwant Singh person, Bhagwant Singh Bangeshwari. If you see nobility of Mughal Empire of the Aurangzeb's period, he is Mansabdar of 5,000. This is the highest Mansabdari which was given to non-Muslim. And he is the king of Attock. Attock is the last place of the Mughal Empire, because thereafter Afghanistan starts, Kabul starts, and the Afghan used to make the lot of invasions over there. And this is the most important place
where they used to, because Mughal need to protect it. And this was under the control of Bhagwant Singh Bangeshwari. If you see, that book has been published by the Oxford. These people are not small people. When you can say कि ये वो जैसे Britishers ने खा दिया गरीब लोग थे, they were very rich, very powerful, politically well established people who laid down their lives, their wealth, only for the cause of truth and humanity and the philosophy of Guru Nanak Sahib. This is Bhai Mani Singh. He is a direct descendant of Guru Nanak, descendant of Raja Bhoj, and he attained martyrdom in 1734. And when the Jalad, he says, because it was asked by the Mughal emperor, ordered by the Mughal emperor, that he should be cut limb by limb. And Jalad ने जब इनको टॉन्ट मारा कि आपका पहला कौन सा अंग काटूं, तो इन्होंने उंगल करके बताया कि पहले मेरा इधर से काटना शुरू कर दो. तो more than hundreds of persons martyred in a span of 200 years by this gentleman's family. And Bhai Mani Singh was such a great person who never showed his back to the philosopher of Guru Nanak Sahib, who laid down his life. And the important thing is that these are the great grandchildren of Bhai Mani Singh. And these small children were infants were killed by the Mughals of this family, and hundreds of infants were killed only of this family. And his wife, Bibi Basant Kaur, at the age of 103, इनको पहले तो मुगलों ने चक्की चलवाई 2-3 महीने 103 साल की बूढ़ी औरत से. उसके सामने, इस औरत के सामने, इसके ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रंस को इस तरीके से जीनोसाइड किया गया. एंड 13 पाना मीठा लाके जो भी है, they never turned back in 200 years. They continued to behave like this only for the philosophy of Guru Nanak Sahib. And this was the mission of truth and revolution. And this is all about me. Lakhs of Banjaras sacrificed their lives well for Guru Nanak Sahib's mission and humanity. And there is shlok in the end. We have failed to narrate the true history of Banjaras. Anyhow, no university is doing anything, but I am thankful to Mumbai University. At least they have started making the endeavors to unveil the truth. And I end my presentation with the shlok of Guru Nanak Sahib. Kood nyukte nanka, kood is falsehood. Kood nyukte nanka odak sach rahi, falsehood will come to end. O Nanak, the truth will prevail in the end. Banjara Sikhs will rise again. Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh. Thank you, sir. Thank you very much. So now I request Pawar sir, please start your presentation. Yeah, and I think after Pawar sir's presentation, followed by the question and answer, with the permission of the today's seminar chairperson. Yes, sir. Sir, over to Pawar sir. Dr. Saab, I may have to take a leave as I have requested you that I have some urgent meeting. So yes, I am already late. मैंने आपका time ज़्यादा ले लिया. It's already 7:30. Yeah, and with your due permission, if you say, may I take your leave? So, thank you, sir. Basically, sharing your very valuable thoughts and inputs regarding today's topic. So I think our chairperson Dhamija sir is here. So he will take the charge and he can explain everything on my behalf. Yeah, Gagandip ji. हाँ जी. तो एक रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन आंसर आएंगे तो आपके मुंह जबानी उत्तर सुनने में काफी अच्छा लगेगा. आप थोड़ा 15 मिनट और रुकिए. मैं जो मुझे Gagandip sir, if it is possible, after half an hour, please, if possible, please join the seminar. If possible, otherwise okay, we will handle, no problem. But sir, for your valuable contribution, very much thankful to you, sir, on behalf of the department. Yes, sir. Now over to Jairam Pawar, sir. Thank you, sir. Start your presentation. Yes. Thank you, Gagandip ji. मैं शुक्रगुजार हूँ बॉम्बे यूनिवर्सिटी के HOD श्री प्रकाश मसराम सर
पंजाबी साहित्य अकादमी हरियाणा के डिप्टी चेयरमैन श्रीमान गुरविंदर सिंह जी, हमारे एक रिसोर्स पर्सन श्री गगनदीप जी, बहुत बहुत अच्छा जानकारी दी, अच्छी जानकारी साझा की, और हमारे इस ग्रुप में काफी लोग भी जुड़े हैं, उनको ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने से मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। गगनदीप जी ने जो बातें कही, लगभग सभी बातें आ गई है, कुछ बातें दोहराने की मुझे लगता है कि जरूरत नहीं है, क्योंकि द रोल ऑफ बंजाराज इन द सिखिज्म, ये फर्स्ट गुरु से लेकर 10वें गुरुजी तक उन्होंने पूरी बातें साझा की है। आज के इस महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस में मैं कुछ बातें आपको साझा करूंगा। 14th सेंचुरी से पहले जो कुछ बातें थी, उसमें अहम और महत्वपूर्ण जो भूमिका थी बंजारों की, वो क्या थी? लगभग मोहनजोदड़ो हड़प्पा सिविलाइजेशन में हम जाएंगे। ये सिविलाइजेशन में बंजारों का रोल बहुत महत्वपूर्ण था। जो 19वीं सदी में वहाँ उत्खनन किया गया, उस उत्खनन में जो जो चीजें मिली, जो जो बातें मिली, वो पूरी बातें बंजारों की कल्चर, बंजारों के रहन सहन, बंजारों की वेशभूषा, इन सभी से मिलती है। चाहे हड़प्पन साइट देखो, मोहनजोदड़ो साइट देखो, चौहनजोदड़ो देखो, लोथल देखो, हर एक जो सिविलाइज साइट है, ये हर सिविलाइज साइट में ये बंजारों का रोल यहाँ महत्वपूर्ण दिखाई देता है। इन मोहनजोदड़ो हड़प्पा का जो काल था, मैं बताऊं कि ये झूठ ना हो, ये मोहनजोदड़ो हड़प्पा का काल ही ऋग्वेद में लिखा गया है। यदि हम ऋग्वेद को बारीकी से पढ़ेंगे तो वहाँ के जो युद्ध हुए, वहाँ के जो भौगोलिक परिस्थिति बताई गई, वो पूरी स्थिति मोहनजोदड़ो हड़प्पा से मेल खाती है। वो हड़प्पा में देखो, चौहनजोदड़ो में भी देखो, बंजारो साहित्य में ये बात सामने आती है कि तकरीबन 100 से ज्यादा नगरी, यानी कि जो मोहनजोदड़ो नगर था, हड़प्पन नगर था, ऐसे 100 से ज्यादा नगरी वो उत्खनन होना उसका जरूरी है। तो 100 से ज्यादा नगरियाँ थी, उसमें से मोहनजोदड़ो है, चौहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, लोथल है, और अलग अलग अभी कालीमंगान है हरियाणा में, राजस्थान में। तो बाकी के ऊपर अनुसंधान होना जरूरी है, मुझे ये लगता है। तो इस मोहनजोदड़ो पीरियड में ये जो बंजारे थे, इनका नाम पणी था, पणी। इनको पणी नाम से जाना जाता था, जो ऋग्वेद में क्लियर कट लिखा है। ये पणी लोग जो थे, जो बंजारे थे, जिनको डैम बनवाने की कला थी, ये साहित्य में परिपूर्ण थे, ये संस्कृति में पूर्ण थे, ये बौद्धिक पूर्ण रूप से विकसित थे, और आर्थिक रूप से तो पूर्ण विकसित थे ही। उस वक्त बंजारों के हाथों में, पर्टिकुलरली इंडियन सबकॉन्टिनेंट की जो आर्थिक सत्ता की चाबी थी, ये बंजारों के हाथों में थी। जब ये बंजारे कहीं ट्रैवलिंग करते थे ट्रेड के हिसाब से, व्यापार के लिए, तो ये पूर्व से पश्चिम, दक्षिण से उत्तर, यानी पूर्व से पश्चिम, यानी ये चीन, जापान, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर से लेके इधर वेस्टर्न कंट्री तक, अफ्रीका तक गए, और साउथ से नॉर्थ तक, यानी कि इंग्लैंड से आगे जाके इधर साउथ तक, श्रीलंका तक, पूरे इनका व्यापार चलता था। अभी ये लोग इतने अमीर थे कि पूछो ही मत। इन खुद के ये 2 गुटों में काम करते थे, व्यापार करते थे। एक गुट इनका था सी ट्रेड करता था, जो सामुद्रिक जहाजों से ये माल लाते थे, और दूसरा गुट समुद्र से जो माल आता था, इम्पोर्टेंट, जो कीमती भरा सामान था, वो सामान लेके वो कॉन्टिनेंट में, देश में वो पहुंचाने का काम करते थे। अब हम ये देखेंगे कि ये जो लोग जाते थे, तो ये लोग जिस रास्ते से गए, उस रास्ते को इतिहासकारों ने इसको लमान मार्ग नाम दिया है। तो ये पूरे भारतवर्ष में लमान मार्ग मिलेंगे,
चाइना में आपको ये रेशम मार्ग से मिलेगा, अफ्रीका तक मिलेगा, इंग्लैंड तक मार्ग मिलेगा ये। और आज जो भी जितनी भी सड़कें हैं, नेशनल वेज है, नेशनल हाईवेज है, स्टेट रोड है, ये मैक्सिमम ये बंजारों की ही देन है। और इसी रोड के पैरेलल ये भारत सरकार ने रेल बनाई। मेरे कहने का उद्देश्य ये है कि ये जो बंजारे थे ये कोई मामूली नहीं थे, ये इतने अमीर थे कि इनकी खुद की फौजें होती थी। मान लो कि 15वीं सदी में भाई लक्की शाह बंजारा थे, 15वीं-16वीं सदी में उनके पास 4 लाख बालक थे। अब 4 लाख बालक जो व्यापारी अपने एक ट्रेड में 16,000 मीट्रिक टन से ज्यादा साहित्य का आदान प्रदान करता था, वो बहुत बड़ा था, 16,000 मीट्रिक टन। और उस टाइम जो इंटरनल भारत के अपने लोग थे, उन सभी को ये सामान पहुंचाने का काम बंजारे करते थे। अब ये बात आती है मोहनजोदड़ो हड़प्पा में आ गई बड़ी नाम से। उसके बाद गुप्त पीरियड। गुप्त पीरियड में इन सभी बंजारों को भंडी नाम से या श्रेष्ठी नाम से जाने जाते हैं। अभी आपके जानकारी लेके एक बात साझा कर दूं कि जो थानेसर के राजा थे श्री हर्षवर्धन, वो भंडी कुल के थे। अब ये भंडी कुल के होने से उनका नाता पश्चिम बंगाल में जो राजा शशांक गौर थे, शशांक गौर और मालवा के जो गुप्त थे उनका आपसी रिश्ता था। मालवा के गुप्त और थानेसर के हर्षवर्धन, इनका भी नाता था। गुप्त की जो बहन थी वो हर्षवर्धन की फूफी थी। इससे ये साबित होता है कि ये जो गौर बंजारों का इतिहास है ये पूरे भारतीय उपखंड में फैल चुका था। अब ये इतिहास क्यों सामने आया नहीं, किसने लिखा नहीं, ये संशोधन की बात है। लेकिन जो बात हमें पढ़ने को मिलती है हिस्टोरिकली, उससे भी हम ये कुछ बातें भी साझा आपके साथ साझा कर रहे हो। ये प्रवास के दरमियान एक सबसे अहम भूमिका गुरविंदर सिंह जी ने निभाई, उनकी टीम ने निभाई, क्योंकि ये लोहगढ़ किताब जो उन्होंने उसके ऊपर अनुसंधान करके जो रिलीज की, ये शताब्दी की सबसे बढ़िया किताब रहेगी ऐसा मुझे लगता है। काफी लेखक लोग किताबें लिखते हैं, लेकिन डायरेक्टली फील्ड पर जाकर उसकी वास्तविकता चेक कर अलग अलग साहित्यों से परख कर उन्होंने एक किताब लिखी है। और ये किताब के माध्यम से बंजारों की जो हिस्ट्री सामने आई वो अद्वितीय हिस्ट्री है। मैं गुरविंदर सिंह सर जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आपने इतनी अच्छी किताब लिखने का प्रयास किया। और वो जो किताब है, वो किताब के हर एक संदर्भ हम जब चेक करेंगे तो सब संदर्भ हमें मेल खाते मिलते हैं। गुप्त के पीरियड में तो भंडी थे, उसके बाद हम आगे आएंगे 8वीं सदी में। कर्नल टॉड ने क्या लिखा है? कर्नल टॉड बोलते हैं कि ये जो सम्राट अशोक का वंशज था मौर्य, ये सम्राट अशोक का मौर्य वंशज आगे चलकर पवार वंश में कन्वर्ट हुआ है। ये कर्नल टॉड ने द एंटिक्विटीज एंड एनल्स ऑफ राजस्थान में बहुत अच्छी तरह से उन्होंने प्रूफ दिया है। तो इसका मतलब ये है कि मौर्य डायनेस्टी कन्वर्टेड इनटू पवार, और वही आगे 10वीं सदी में राजा भोज की बनी। बाद में उज्जैन की वही डायनेस्टी थी। 10वीं सदी में सबसे जो अहम राजा थे, राजा भोज, जिसके ऊपर भाई गगनदीप जी ने काफी जिक्र किया, वो भाई बल्लूराव, भाई मनी सिंह यहाँ तक आ गई। ये जो रिकॉर्ड हमें मिला है ये पंजाबी साहित्य अकादमी के द्वारा ही रिकॉर्ड हमें मिला है। ये हमें ये जो हिस्टोरियन है, जो हिस्ट्री के विद्वान है, जो हिस्ट्री की स्टडी करते हैं, उन सभी तक ये जाना जरूरी है, क्योंकि ये इतना गौरवशाली इतिहास होने के बावजूद ये सामने क्यों नहीं आया।
मैं उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। 12वीं सदी में राजा भोज के बाद जो उनकी आगे पीढ़ी चली 16वीं सदी 17वीं सदी तक, ये सभी सदी में बंजारों ने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया, महत्वपूर्ण रोल निभाया। ये जो हमारे सिख गुरु थे, सिख गुरु साहिबान, पहले 4 सिख गुरु साहिबान, उसमें गुरु नानक देव जी थे, गुरु अंगद देव जी थे, गुरु अमरदास जी और गुरु रामदास जी। ये तो टांडे में ही रहते थे। ये टांडे में रहने से क्या हो गया कि उनकी जो विचारधारा है, जो बंजारों की विचारधारा क्या है कि जो भूखा है उसको रोटी दे, प्यासे को पानी दे, और जिसको कोई निवारा नहीं उसको अन्न वस्त्र और निवारा दे। ये बंजारों की आइडियोलॉजी है। यानी कि बंजारों में एक कहावत है कि कहते हैं कि सेन साई वेश, यानी कि सभी का कल्याण कर। ये आइडियोलॉजी बंजारों की है। अब ये सभी गुरुजी ये टांडे में ही रहते थे, तो सिख आइडियोलॉजी या सिख विचारधारा या सिख धर्म की स्थापना पर बंजारों का अहम प्रभाव रहा है। इसके ऊपर ज्यादा अनुसंधान होने की जरूरत है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो इतिहास लिखा गया सिख धर्म का, वो पूरा गुरबानी में है, और वो गुरबानी में होने से पढ़ने में थोड़ी सी मुश्किल आती है। मेरी गुरविंदर सिंह सर से एक विनती रहेगी कि जो भी गुरबानी में रिकॉर्ड है, किताबें हैं, पुरानी किताबें, उसको यदि आप हिंदी में ट्रांसलेशन करने का प्रयास उठाए तो हिस्ट्री के और पहलू निश्चित विश्व के सामने हम ला सकते हैं। ये जो 4 गुरु थे, ये 4 गुरुओं ने टांडे में की जो आइडियोलॉजी थी, वही आइडियोलॉजी से हम देखेंगे। यदि गुरु ग्रंथ साहिबा मैंने पूरी पढ़ी, तो गुरु ग्रंथ साहिबा में जो शब्द है, लगभग 60%, 60% शब्द ये बंजारों के शब्द आते हैं। और यही गुरुजियों ने जो अलग अलग श्लोक दिए हैं, जो अभी भाई गगनदीप जी ने बताए, उसमें से कुछ श्लोक मैं आपको साझा करूंगा। गुरु नानक देव जी ने कहते हैं कि वणज कुरु वणजारियो वकुरु लिउ समाली, व्यापारी वणजारिया आउ वजहू लिखाई, पहले पहरे रहीन के वणजारिया मित्रा हुक्मी पैया गर्भासी। यानी कि गुरु नानक देव जी ये 1469 में उनका जन्म हुआ, और उसके बाद उन्होंने बंजारों के ऊपर तकरीबन ज्यादा से ज्यादा श्लोक बंजारों के ऊपर उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिबा में लिखे हैं। जो दूसरे गुरु है गुरु अंगद साहिब जी, वो कहते हैं कि बखरते वणजारिया तुहा रही समाई, वस्तु लई वणजा रही वखरू बधा पाई। गुरु ग्रंथ साहिबा में गुरु अंगद साहिब जी ने बहुत अच्छी तरह से ये श्लोक बंजारों पे लिखा है। तीसरे गुरु साहिबान बोलते हैं कि सच्चा साहू सच्चे बंजारे, यानी कि जो बंजारे हैं वो सच्चे हैं, सच्चे ट्रेडर्स है। चौथे जो गुरु है गुरु रामदास जी बोलते हैं, पहले पहरे रेणी के वंजारिया मित्रा हरपाई या उधर मंझारी, हम वणजारे राम के। यहाँ उन्होंने हम वणजारे शब्द का इस्तेमाल गुरु रामदास जी साहब ने किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बताया है हम वणजारे राम के, यानी कि हम बंजारे जो है वो राम के हैं, लॉर्ड्स के बराबर है। आगे वो बोलते हैं कि आपे साहू वड़े स्वामी हम वणजारे आई, यानी कि हम वणजारे जो है वो साहूकार है, साहू है, स्वामी है। आगे चलकर गुरु अर्जुन देव जी बोलते हैं, तू वड़ साहू जाके कोटी वणजारे, यानी कि बंजारे एक कोटी में है। इतनी बड़ी अहम और महत्वपूर्ण बात सभी गुरुओं ने गुरु ग्रंथ साहिबा में बताई है। इसके बाद में भगत कबीरदास जी बोलते हैं कि ऐसा नायको रामो हमारा, सगल संसार रोकियो बंजारा। नायकू एको बंजारे पाच, तो भगत रविदास जी कहते हैं, को बंजारो राम को मेरा टांडा ला दियो जाए रे,
हो बंजारो राम को सहज करो व्यापारो। ये जो सिख गुरु साहिबान ने गुरु ग्रंथ साहिब जो सिख धर्म का विश्व का सबसे अहम और महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इस ग्रंथ में लगभग 100 से ज्यादा बंजारों के ऊपर श्लोक दिए हैं। हम पढ़ेंगे गुरु ग्रंथ साहिबा तो उसमें बाकी जाति धर्म के लिए ज्यादा उन्होंने कोई श्लोक दिए नहीं, लेकिन बंजारों के ऊपर उन्होंने 100 से ज्यादा जो श्लोक दिए हैं वो सामने आते हैं। सभी श्लोक मैंने पढ़े हैं। इससे एक बात अहम सामने आती है कि यदि 60% शब्द बंजारे हैं, बंजारा बोली के है, गौर बोली के है, सभी गुरुओं ने इतने बड़े पैमाने पर इतने श्लोक गुरबानी में दिए हैं, गुरु ग्रंथ साहिबा में दिए हैं, और इससे बड़ी एक बात सामने मेरे आई गुरु ग्रंथ साहिबा पढ़ते कि जो गुरु ग्रंथ साहिबा में 31 टाइप के राग दिए हैं। ये 31 टाइप के राग में एक राग है गौड़ी महला, यानी कि ये गौर जो गौर बंजारे का गाना गाते हैं, वही रागों में ये श्लोक गाना चाहिए, ऐसा सभी गुरुओं ने लिखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसके ऊपर हम सभी ने अध्ययन करना जरूरी है। ये 10वें गुरु साहब जो थे गुरु गोविंद सिंह जी, जो नांदेड़ जाने से पहले उन्होंने भाई मनी सिंह बिजरावत को अमृतसर का हेड ग्रंथी नियुक्त किया था। उन्होंने बखूबी से वो पद का काम निभाया। भाई गगनदीप जी ने बताया कि कितने बंजारों का कितनी शहादतें ये सिख धर्म में हुई है। ये सब हम देखेंगे, गौर से देखेंगे तो ये बात सामने आती है कि यदि बंजारों को सिख धर्म में से निकाल दिया जाए तो ये आइडियोलॉजी जीरो हो जाती है। आगे चलकर हम जाएंगे, जो भाई लक्की शाह बंजारा, भाई बल्लू राय थे, जो चौहान, पवार, राठौर, यादव फैमिली थी, इन फैमिली के जो महानुभाव थे, बड़े बड़े योद्धा थे, इन्होंने हिस्ट्री में बहुत अहम रोल निभाया है। जैसा कि हम जानते हैं कि हम्पी जो विजयनगर साम्राज्य था, ये साम्राज्य में भाई मक्खन शाह लबाना जी का जन्म हुआ, वहाँ वो व्यापार करते थे। यानी कि ये बात है 12वीं-13वीं सदी की। ये जो इतिहास का मामला चला है ये 12वीं सदी से लेके 16वीं सदी तक, यानी कि 400 साल में काफी उलट पुलट इस इतिहास में हुई है। फिर भी इतिहासकार कुछ लिखते नहीं बंजारों के बारे में, सिर्फ ये लिखते हैं कि वो तो घुमंतु थे, नाचने वाले थे, गाने वाले थे। सही में देखा जाए तो बंजारों का इतिहास, वो जैसे गगनदीप जी ने बताया कि बंजारा जो द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। 17वीं सदी में भारत का जीडीपी था 24% और इंग्लैंड का जीडीपी था 8%। जिस देश ने हमारे मुल्क पर 150 साल राज किया, उस देश का जीडीपी 8% था और हमारा 24%, यानी कि इंग्लैंड की जीडीपी से 3 गुना ज्यादा जीडीपी हमारे भारत की थी। ये जीडीपी कैसे बढ़ी, ये जीडीपी में अहम रोल किसका था, ये हम देखेंगे। तो जो ट्रेडर्स थे, जो बंजारे थे, ये 24% में से कम 16-17% नेटवर्थ बंजारों द्वारा जो ट्रेड किया गया, वो ट्रेड से जो रॉयल्टी मिलती थी, टैक्स मिलता था, वो टैक्स से पूरी जीडीपी बनी थी। तो अब हमारे लोग कहते हैं कि बंजारे गरीब है, इतिहासकारों ने लिख दिया गरीब है। इसके ऊपर जो प्रोफेसर्स है, लेक्चरर्स है, टीचर है, उन्होंने ज्यादा ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि ये तुम प्रूफ के साथ सभी बातें गगनदीप जी और गुरुविंदर सिंह जी ने ये सभी बातें सामने रखी है, तो जस्ट उसको टचअप करना है, आगे बढ़ना है। बंजारों का रोल सिखिज्म में क्या था, यदि गुरु ग्रंथ साहिबा में आपने देखा, जब 1709 में 10वें गुरु साहिबान गुरुदेव जी उनका अंत हुआ, तो उन्होंने
एक बंजारा को ही धर्म ग्रंथ को गुरु मानने का जो आदेश दिया था गुरु गोविंद सिंह जी ने, तो वो एक बंजारों को ही दिया था। और उस बंजारे ने 5 पैसे उस टाइम और एक नारियल देके मत्था टेक के 1708 में आज के बाद कोई गुरु नहीं होगा, सिर्फ ग्रंथ ही गुरु होगा, ऐसा उन्होंने आदेश दिया था। उस टाइम पे 1709 में इधर अमृतसर में भाई मनी सिंह जी और उनके पूरे खानदान के लोग सिखिज्म के साथ जुड़े हुए थे और इस आइडियोलॉजी को बचा रहे थे। हम ये देखेंगे कि देखो कोई जो गुरु ग्रंथ साहिबा में कितने लोगों की लगभग 36 महानुभावों की वाणियां हैं, उसमें एक वाणी भाई रामावत की है, जिसको इतिहासकारों ने कुछ अलग जाति के उन्होंने बताया है। मेरी आप सबसे विनती है कि इसके ऊपर ये रामावत जी जो थे ये सेवालाल महाराज के वंशज से थे। ये रामावत जी जो थे इन्होंने 14वीं सदी में ये काशी में रहते थे। काशी में होने के बावजूद उन्होंने इस अपने गुरु ग्रंथ साहिबा में उनकी कुछ वाणियां आई है रामावत जी की, उसके ऊपर भी थोड़ा अनुसंधान होना जरूरी है। मैं गुरुविंदर सिंह जी से एक विनती करूंगा कि इस गुरु ग्रंथ साहिबा में जो 36 महानुभावों की वाणी आई है उसमें से एक रामावत जी है, और वो रामावत जी जो अपने बंजारा समाज के गुरु देवत है सेवालाल महाराज, उनके खानदान से आते हो, लेकिन इतिहास में उनको कुछ अलग नाम से लिख दिया है। उसके ऊपर भी बातें ज्यादा अनुसंधान होना जरूरी है। मित्रों, बातें तो बहुत कहने जैसी है। गगनदीप जी ने काफी बातें साझा कर दी है। अभी चेयरपर्सन श्री गुरुविंदर सर भी बात करने वाले हैं। मेरी आप सबसे यही विनती है कि आप ज्यादा से ज्यादा लिखने का प्रयास करें, पढ़ने का प्रयास करें। तो हिंदी में एक कहावत है, 100 बका एक लिखा। हम बातें करते हैं लेकिन लिखते नहीं। यदि ये हरियाणा साहित्य अकादमी ने ये लोहगढ़ की किताब न लाई होती तो बंजारों का इतिहास अंधकार में था। यदि एक लालटेन पंजाबी साहित्य अकादमी हरियाणा के गुरविंदर सिंह सर गगनदीप जी ने एक बत्ती जलाई है, उस बत्ती का सहारा लेके हम आगे चल सकते हैं। हम सभी लोगों ने उसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। कुछ बातें कुछ किताब जो है जो पंजाबी साहित्य में आते हैं उसमें शहीद बिलास भाई मनी सिंह एक बहुत इम्पोर्टेंट किताब है। इस किताब को मैं गुरुविंदर सिंह जी से विनती करूंगा कि इसको हिंदी में होना जरूरी है, क्योंकि ये पंजाबी साहित्य में बहुत तकलीफें आती है। पंजाबी में पढ़ने वाले लोग काफी कम है, तो जब ज्यादा से ज्यादा इसको हिंदी में आएगा, देवनागरी लिपि में आएगा, तो इसका हिस्ट्री में करेक्शन करने का और एक मौका हम सभी को मिल सकता है। तो ये सब बातें रही। मैं फिर से एक बार शुक्रगुजार हूँ पंजाबी साहित्य अकादमी के डिप्टी चेयरमैन गुरुविंदर सिंह सर का, क्योंकि आपने इतना अच्छा मौका आज सभी अभिभावकों को सुनने के लिए दिया। उसके बाद मैं बॉम्बे यूनिवर्सिटी के HOD श्री प्रकाश मसराम सर और उनकी पूरी टीम, इनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि ये इतिहास की जानकारी हर एक को होना जरूरी है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे, यदि किसी समाज को नष्ट करना है तो उस समाज की हिस्ट्री या समाज का इतिहास नष्ट कर दो, तो आपको बाकी समाज को नष्ट करने की जरूरत नहीं। तो सभी से मेरी हाथ जोड़कर विनती है, आप ज्यादा से ज्यादा हिस्ट्री के बारे में देखें और जो सही हिस्ट्री है वो रिकॉर्ड पे लाने की कोशिश करें। धन्यवाद। जय सेवालाल। Yes. Thank you, sir. Thank you very much for giving your valuable inputs regarding this topic. So now I would like to request today's chairperson, Guruvinder Singh Dhamija sir. Please kindly give your chairperson remark for the today's seminar. प्रकाश मसराम जी
जयराम पवार जी और गगन जी जो अभी अपना लेक्चर देके गए हैं, मैं तीनों को बड़ा थैंकफुल हूँ कि उन्होंने हरियाणा पंजाबी साहित्य अकेडमी को ये मान, एक इज्जत जो दिया है। ये सब काम आप लोगों का है और हमारा जो भी किया वो हमारा फर्ज था। और मैं सबसे बड़ा आपको बधाई इस बात का देना चाहूंगा कि आज के पूरे सेमिनार में ये जो लगभग 2 घंटे चला है, इसमें किसी किस्म का कोई डिस्टरबेंस नहीं हुआ। और थ्रू आउट, जयराम जी आपने भी नोटिस किया कि नहीं, थ्रू आउट 100 मेंबर लगातार इसको सुन रहे हैं। हाँ नहीं जी, तो जितना सेमिनार भी हमने मेजॉरिटी में करवाए हैं उसमें कभी कभी संख्या 100 पहुंच जाती है, पर ज्यादातर 40, 45, 50 पर आकर अटक जाती है। पर इसमें जो 100 की संख्या है, ये इस चीज को क्लियर करती है, द इंटरेस्ट ऑफ बंजारास इन बंजारा हिस्ट्री। तो मैं इस बात के लिए गुरु गोविंद सिंह चेयर जो है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में, उसको भी, उनके डिपार्टमेंट को भी और एचओडी को, सभी को बधाई देता हूँ। अच्छा, इसमें एक जो आज गगनदीप जी ने आपके सामने सारी बात रखी है, और कुछ लोग थोड़ा मुझे ध्यान किया, मैंने वो हैंड रेज करके ये कहने का कोशिश कर रहे थे लैंग्वेज। तो मैं सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि लैंग्वेज हमारा जो है वो एक कम्युनिकेशन का माध्यम है। ये जो हमारा कई बार हमें आ जाता है भाई, जो उर्दू बोलता है वो सिख है, वो मतलब मुसलमान है, और जो इंग्लिश बोलता है वो क्रिश्चियन है, हिंदी वाला हिंदू है, पंजाबी वाला जो है सिख है। ये भ्रम हमें मन से निकालना पड़ेगा। ये कम्युनिकेशन है। जो अभी जयराम जी बहुत अच्छी बता रहे थे कि कम्युनिकेशन के लिए एक समुद्री रास्ता था, एक जमीनी रास्ता था, फिर हवा का रास्ता खुला, और आजकल जो इंटरनेट है ये एक चौथा माध्यम आ गया है जो तीनों से ही बहुत तेज है। तो हमने कम्युनिकेशन के लिए वो सब आना चाहिए जिससे हमें दूर दराज भी जा सके और जल्दी भी जा सके। तो कृपया करके जिस भी भाषा में कोई बोलता है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें उसमें से क्या ज्ञान चाहिए। हमारा ध्यान जो है वो ज्यादा ज्ञान में होना चाहिए, जो हमें प्राप्ति हो रही है उसमें होना चाहिए। हम कोशिश करें कि हम जो ज्यादा है वो इस तरह का क्वेश्चंस को कोशिश करें कि हम लोग, हाँ, किसी को मान लीजिए हिंदी में या इंग्लिश में या किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसके लिए ट्रांसलेशन भी है, उसके लिए अपना किसी दोस्त को भी अपने साथ बैठा सकते हैं। और कोई बात अगर किसी को क्लियर नहीं है तो वो लोग इसको बाद में भी पेन डाउन करके और ऑर्गेनाइजर के थ्रू वो क्वेश्चंस अपने ले सकते हैं। मैं काफी लोगों को देख रहा था जो गगन जी से कुछ पूछना चाह रहे थे, पर लेक्चर के बीच में किसी को रोककर पूछना बहुत मुश्किल होता है, उसका लेट टूट जाता है, उसका बात करने का जो परफॉर्मेंस है टू डाउन हो जाता है। तो बहुत से लोगों का क्वेश्चन है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रकाश जी से कि वो सब आपके जानकारी में है तो अभी एक अपना मोबाइल नंबर या अपना एक मैसेज ड्रॉप आउट कर दीजिए इसमें चैट में। किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो वो प्रकाश जी को लिखत में मैसेज भेज सकते हैं, और ये प्रकाश जी गगन जी से, जयराम जी से, मुझसे कहीं से भी उसका जवाब चाहिए होगा तो हम मेक श्योर करेंगे कि वो जवाब जो है उस आदमी तक पहुंचना चाहिए ताकि उसका इंटरेस्ट बना रहे। इसके बाद अभी कुछ एक बहुत अच्छी बात कही जयराम जी ने, कुछ ट्रांसलेशन की बात कही है। तो हरियाणा पंजाबी से sorry to interrupt you. Before your remark, if it is the delegates or respected scholars, those are present over here, want to ask the questions some to Pawar sir. So sir, kindly request you please allow to them if it is possible. कोई बिल्कुल बिल्कुल किसी को कोई क्वेश्चन, अगर जयराम जी बैठे हैं, मैं भी बैठा हूँ, आप भी हो, कोई भी क्वेश्चन किसी को लेना है तो दिस इज द राइट टाइम, क्योंकि हमको लेक्चर नहीं देना है। 2 बहुत अच्छे लेक्चर सुने हैं, और अच्छा लेक्चर के बाद हल्का लेक्चर तो वैसे भी नहीं होना चाहिए। तो कोई भी क्वेश्चन अगर पूछना चाहे तो मोस्ट वेलकम है। तो जो ट्रांसलेशन की बात जयराम जी ने कही है वो मैं इनको एश्योर करता हूं कि हरियाणा पंजाबी साहित्य अकेडमी कोई भी ट्रांसलेशन पंजाबी से
किसी भी लैंग्वेज में या किसी भी लैंग्वेज से पंजाबी में कर सकती है, अपने दायरे में है। तो आपको मैं 2 ऑफर देता हूं। पहला ऑफर है कि आपको पंजाबी का दुनिया का कोई भी बुक परचेज करना है तो वो एकेडमी आपको परचेज करके गिफ्ट दे सकती है। सेकंड, आपको कोई भी सिख हिस्ट्री का पंजाबी का बुक का हिंदी ट्रांसलेशन करना है, वो अगर आप एकेडमी से करवा लें या लोकल कोई आदमी आपका जो वहाँ स्कॉलर हो जो कर सकता है, तो उसको पेमेंट भी हो जाएगा या हम करवा के दे देंगे। दोनों तरफ से हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ओनली थिंग यू हैव टू सेंड योर डिमांड ऑन ईमेल, क्योंकि द ओनली सिस्टम आई स्टार्टेड इन द अकेडमी इन 4 years बैक वाज वो जो टेलीफोन वाला कल्चर था ना, मैं चेयरमैन साहब को पर्सनल फोन करो तो वो ऑब्लाइज करेंगे, नहीं तो नहीं, वो सिस्टम मैंने खत्म कर दिया है। नाउ ओनली पीपल हैव टू राइट अ सिंपल मेल टू द अकेडमी फॉर पब्लिकेशन ऑफ द बुक्स, फॉर पब्लिकेशन ऑफ द आर्टिकल्स, for conducting seminars, and there is no siparish like thing in Haryana Punjab State Academy. Only merit prevails and only email prevails. इसके बाद एक छोटा सा भाषण में कहना चाहूंगा कि किसी भी कंट्री के लिए जो है इकोनॉमी इज द मेन कॉज जो है कंट्री का रिचनेस का और उसका पावर का रहता है। अभी भी जैसे अमेरिका के पास अगर 16% इकोनॉमी है तो दे आर रूलिंग द वर्ल्ड, एंड रेदर मैं रूलिंग से भी ज्यादा कहूंगा कि वो दुनिया को जैसे भी चाहे तो मन मर्जी से कर रहे हैं। तो जब इंडिया के पास 25.4% इकोनॉमी था तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हाउ पावरफुल वाज इंडिया, एंड द बैकबोन ऑफ दैट इकोनॉमी वाज बंजारा कम्युनिटी ओनली। दे वर ऑफ कोर्स नंबर 5th or 6th level traders in the world, but after embarrassing the love and affection of Guru Nanak, they all reached on the number 1 platform of trade in the world, and economy of the country lifted like anything. And then Jairam ji were again saying something about Ramavat and Sevalal and study Guru Granth Sahib and all that. So my answer to all the queries is ki whatever request or whatever demand is sent through email to academy will be always accepted. और मैं चाहूंगा कि आप क्वेश्चन ले लीजिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें से अगर जयराम जी और हम कोई जवाब दे पाएंगे तो दे देंगे, अगर कोई क्वेरी हमारी उसको जवाब इकट्ठा करके भेजने की होगी तो वो भी हम जरूर करवाएंगे। तो प्लीज किसी को कोई भी क्वेश्चन लेना तो अलाउ कीजिए। Yes, basically most of the delegates and the scholar who requested to us to organize this seminar physical mode. So we will try our best. So if it is our honorable deputy chairperson allowed to, in collaboration that seminar in future or coming one to another month. So definitely we will organize. But I think if it is any question, यदि आपके कुछ क्वेश्चन अभी पवार सर यहाँ मौजूद है, इनके बारे में यदि है, उनके टॉपिक से रिलेटेड है, तो डेफिनेटली प्लीज काइंडली आस्क। जेठालाल राठौड़ आपने, हाँ पूछिए आप। हाँ यस सर मैं एक पीएचडी स्टूडेंट हूँ सर, उसके अलावा मैं कुछ नहीं हूँ सर। अच्छा, तो आपका कुछ क्वेश्चन है? आपने हैंड रेज किया था। जी सर, नहीं सर, वो तो पहले ही किया हुआ है, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। Okay. लेकिन इसी समाज के, बंजारा समाज के ऊपर ही मेरी पीएचडी चालू है सर, पुणे विश्वविद्यालय के अंतर्गत आकरोडी कॉलेज में। वेरी गुड। So now another delegates, Hemant Rathod, please ask your question और आपका क्वेश्चन पूछिए, आपने हैंड रेज किया था। Okay, so now I over to Dr. Ashok Pawar sir, please ask your question. Yes. और धन्यवाद सर। मेरा प्रश्न वैसा कोई बड़ा नहीं है। पहले तो मैं बधाई देता हूँ मुंबई विश्वविद्यालय और हमारे भाई साहब जयराम जी और गगनदीप सिंह जी को कि उन्होंने ये कार्यक्रम में शिरकत की और उन्होंने स्वर्णिम बंजारा इतिहास में अपना योगदान दिया है। ये एक बात।
दूसरी बात, गगन अभी गुरविंदर सिंह साहब यहाँ बैठे हैं, तो मेरा ये प्रश्न है कि जो अभी हमारे जयराम भाई ने जो कहा था कि भाई ये पंजाबी भाषा में जो ज्ञानी गरजा सिंह जी शहीद विलास जो लिखा है वो ऑलरेडी मैंने हिंदी और अंग्रेजी में भाषांतरित कर दिया है। अगर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, गुरविंदर सिंह जी अगर परमिशन देते हैं तो मैं डीटीपी करके 8 दिन में आपको वो किताब इंग्लिश और हिंदी में मैं भेज सकता हूँ। एक बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो मैं बार बार ये पूछ रहा हूँ कि हम समाज हित में और गुरु के बंदे के नाते हम ये धर्मनिरपेक्षता का जो इतिहास है उस पर जो हम चर्चा कर रहे हैं, तो वो चर्चा हम समाज हित में ही कर रहे हैं। इतने व्यस्त समय में हमारे जयराम जी, गगनदीप सिंह जी और ये लोग काम कर रहे हैं, तो ये बधाई के पात्र है, क्योंकि करीबन 25 साल से कम मैं और मेरी धर्मपत्नी सुनीता राठौड़ हमने स्वर्णिम बंजारा इतिहास के 10 खंडों का लेखन कार्य पूरा किया है। और हाल ही में जयराम दादा को मैंने वो किताबें, मैंने 3 किताबें भेंट दी है, और इंग्लिश वर्जन करीबन 250 और 300 550 पन्नों का लक्की शाह बंजारा का स्वर्णिम इतिहास भी है। मेरा प्रश्न ये है कि अभी गगनदीप सिंह जी ने एक बात कही थी कि शहीद बनी विलास वो बड़े पुत्र थे, तो माफ कीजिए वो बड़े पुत्र नहीं थे। उससे पहले भी जेठा सिंह और ये 2 पुत्र, उनके बाद तीसरा नंबर के वो शायद पुत्र थे, ये मैं करेक्ट करना चाहता हूँ। और चौथी एक बात हमारे जयराम दादा ने कही थी कि भाई गुरु ग्रंथ साहिब में जो करीबन 90 से ज्यादा 90 बार जो ये विषय आया है, गुरु अपने बंजारों के बारे में जिक्र जो किया है गुरुबानी में, तो उसका भाषांतरण करके मैंने विस्तार से अभी मैंने डिस्क्रिप्शन पे मैंने डाला है कि शहीद आजम लक्की शाह बंजारा, ये जो 364 पन्ने की मेरी जो किताब है उसमें मैंने एक स्वतंत्र प्रकरण करके उसका संदर्भ सहित विश्लेषण, उसका भावार्थ भी मैंने किया है। अगर जयराम दादा उसकी अनुमति देते कि अलग से उसकी छोटी सी एक किताब विस्तार से 100-150 पन्ने की भी वो हो सकती है, अगर आप परमिशन दिया और को प्रकाशित करने के बारे में अगर सोचे तो उसके बारे में भी पहल यहाँ हो सकती है। और तीसरी बात, जयराम दादा ने जो जीडीपी का जिक्र किया, सही बात है, तो मेडिसिन का जो इतिहास है वर्ल्ड इकोनॉमी में उन्होंने ये बात कही है। मेरे अपने कई जो किताब है मल्लू की बंजारन, इस किताब में मैंने वो बात यहाँ दूसरे प्रकरण में भी मैंने वो बात संदर्भ सहित जो कही है वो बात अपने आप में महत्वपूर्ण मुझे लगती है। और तीसरी बात मैं बोले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक फिजिकल बॉम्बे विश्वविद्यालय, अभी हमारे इन 3 किताबों पर नांदेड़ विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय, अलग अलग जगहों पर सेमिनार हुए हैं, तो ऐसा जयराम जी का, गगनदीप सिंह जी का और गुरविंदर सिंह का समय लेकर मैं प्रकाश मेश्राम सर को मैं बोलो तो विनती करता हूँ कि नम्र निवेदन करता हूँ कि एक फिजिकल सेमिनार एक दिन में नहीं होगा, कम से कम 2 दिन का सेमिनार आप रखिए, और जो भी बंदा उस बारे में बात करेंगे तो सिक्खी इतिहास में करीबन, मैंने जो अभी कल परसों सिख जो इंटरनेशनल जो सिख स्टडीज अपने दिल्ली में रकाबगंज में है, वहां में 3 दिन रुका था, तो करीबन 4500 वॉल्यूम सिख हिस्ट्री में लिखे गए हैं। मगर अलग से लक्की शाह, अलग से शहीद मनी सिंह अगर पंजाबी का, ज्ञानी गरजा सिंह का अगर छोड़ दे, अलग से हमारे जयराम जी ने जो मल्लू की लिखी है और हमने जो मल्लू की लिखी है, ये अगर छोड़ दे तो सिख इतिहास में अलग से टाइटल वही शहीद मनी सिंह, शहीद दयाला, बचित्र सिंह नटिया, या बचर सिंह, बाज सिंह, या बज्जर सिंह राठौड़, इसकी अलग अलग युद्धों के साथ अलग अलग किताबें, छोटी छोटी किताबें हो सकती है, क्योंकि बड़ी किताबें तो हमने 300 400 अभी लक्की शाह 550 पन्ने की किताब हो गई है। तो गुरविंदर सिंह को मेरा नम्र निवेदन है कि छोटी छोटी 50-50 100 पन्ने की अगर किताब वो छपवाने का अगर आप कष्ट करते हो, तो ऐसी 50-100 पन्ने की किताबें, करीबन 2500 किताबें, 25 या 50 किताबें मैं हम निकाल सकते हैं, क्योंकि वो घर घर हम बांट सकते हैं, क्योंकि हमारा जो बंजारा को जो स्वर्णिम इतिहास है वो घर घर जाए, ये उसमें बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। अभी एक आखिरी मेरा प्रश्न ये था कि मैं पिछले बार भी जयराम दादा को और इनको लोहगढ़ के बारे में संदर्भ सहित इसके बारे में उन्होंने जो कष्ट किया है वो बात अलग है, मगर ये बात हमें लाइन टू लाइन, पैराग्राफ टू पैराग्राफ, पेज टू पेज, चैप्टर टू चैप्टर हमें रेफरेंस वाइज जाना है कि पर्सनली आई हैव नो डाउट अबाउट योर क्वालिटी एंड कमिटमेंट रिसर्च टुवर्ड्स द सिख एंड बंजारा कम्युनिटी और ट्राइब्स,
But I would like to mention one my important question or suggestion. We ought to be mention our references. Okay. Without references, we have no authority to deliver the lecture in front of the in front of the respected person or delegates. तो इसीलिए ये बात हम ये करें कि हम वो संदर्भ सहित हमें जाना चाहिए. यही मेरा एक महत्वपूर्ण निवेदन है. और जयराम दादा का और गगनदीप सिंह जी का तो बहुत व्यस्त समय है, इसलिए वो फिजिकल उनका पहले समय लीजिए ताकि हम उस पे विस्तार से चर्चा हम कर सके. यही मेरा नम्र निवेदन है. धन्यवाद मुझे शिरकत करने के लिए, मुझे मौका दिया. बहुत बहुत धन्यवाद सर. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल सजेशन. यस सर. हाँ जी, इसमें मैं थोड़ा जयराम जी, मैं थोड़ा सा रोशनी डालना चाहूंगा अगर आप इजाजत दें. हाँ जी. तो मेरे छोटे भाई प्यारे दोस्त ने बहुत अच्छी बातें कही है. पहली बात जो छोटा बुकलेट की बात कही है, दोस्त आप कोई भी बुकलेट जो छपवाना चाहते हैं, अगर उसका हम पंजाबी में कहते हैं खरड़ा, अर्थात कि जो उसका सॉफ्ट कॉपी है वो आप हमें अवेलेबल करवा दीजिए विद प्रॉपर डिजाइनिंग. हम इसको प्रिंट करवा के आपको दे सकते हैं, नंबर 1. नंबर 2, आप हमारे को परमिशन लेकर वहीं छपवा लीजिए तो हम बिल पे कर सकते हैं, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. तीसरा, आपने एक रेफरेंस का बात किया, बहुत अच्छा बात है, क्योंकि गगन जी के पास आज केवल 40 मिनट थे और वो उससे भी ज्यादा समय ले गए अपनी बात करने में. अगर उनसे आप रेफरेंस मांगने लगते तो लगभग वो जयराम जी जानते हैं, वो 10 दिन आपके साथ लगातार बैठकर आपका लास्ट रेफरेंस और लास्ट क्वेरी को भी एड्रेस करेंगे. आप जब भी कहेंगे वो मुंबई जरूर आएंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है. आप एक सेमिनार रखिए वहां पर, और वहां बिल्कुल 1 दिन नहीं 2 दिन रखिए, 3 दिन रखिए. तो गगन जी को अगर छुट्टी लेके भी आना पड़ा तो वो आएंगे. वो एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, इसके लिए उनका जीवन समर्पित है. तो मैं अश्योर करता हूँ, इवन अगर आप हमारा हिंदी लोगड़ बुक जो शायद जयराम जी आपको प्रोवाइड करवा पाए, नहीं तो आप एड्रेस भेजिए, मैं आपको बाय पोस्ट भेज देता हूँ. मैं पढ़ लिया, मैंने पढ़ लिया, दादा ने भेजा है मुझे, पढ़ लिया मैंने वो. उसमें काफी रेफरेंस हमने लगाया है, लेकिन फिर भी अगर कोई भी हम लोग है, कुछ हो सकता है अगर हमसे कमी रह गया तो आपसे पकड़ लेंगे, चीज पकड़ के फिर अगली बार वो लगा देंगे एरेटा में. तो ये सब मिलजुल के हमें काम करना है. जी जी. इस सिलसिले से मैं थोड़ी आगे बात बढ़ाता हूँ पवार सर जी. आपकी बात सही है कि हर पेज, पैराग्राफ, लाइन टू लाइन पैराग्राफ रेफरेंस होना जरूरी है. पहले पढ़ने वालों को पढ़ने तो दो, जब पढ़ेंगे उनको कहीं डाउट आएगा और वो बोलेंगे भाई इसका रेफरेंस क्या है, तब हम देंगे ना. पहले उनको पढ़ने तो दो. तुम खुद स्वयं क्यों प्रश्न निर्माण कर रहे हो? पहले पढ़ने दो. और हमारी जिम्मेदारी है बुक लिखना. यदि कोई महानुभाव बोलता है कि नहीं ये गलत है, तो वो प्रूव करना उसकी जिम्मेदारी है. उसके ऊपर तुम मत टेंशन लो ज्यादा. हाँ, लेखक ने लिखना जरूरी है, रेफरेंस देना जरूरी है. यदि सवाल बाद में कोई फ्यूचर में आए तो वो प्रूव करने की जिम्मेदारी वो पढ़ने वाले की है. मुझे लगता है यहाँ पर ज्यादा हमें जोर देने की अभी कोई जरूरत नहीं है. ठीक है, नो प्रॉब्लम. कोई बात नहीं. आपका सुझाव का स्वागत करते हैं, मगर विश्वविद्यालय में हम 20-25 साल से जब पढ़ाते हैं तो रिसर्च गाइड के नाते हम जो ये काम करते हैं, तो ये बात एसेंशियल हो जाती है कि वी ought to be mention our references. Yes, very true. It is our first duty. Each and every author ought to be mention the references. This is the first बोले तो ये है वो अपना दादा, है कि नहीं? कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, सही है. आपकी बात से मैं सहमत हूँ. एक बात ये है, जो हिस्टोरियन है, जो लेखक है, पहले लिखने का श्रम करे. यदि उसने कुछ गलत भी लिख दिया, आपने दादा 10 खंडों में लिखा है. नहीं, सुनो ना मेरी बात सुनो. बातें या मुंबई विश्वविद्यालय ने पूछे, ये जरा मैं मुंबई विश्वविद्यालय से पूछना चाहता हूँ. आपका काम बहुत सराहनीय है. लगता है मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 10 खंडों का इतिहास लिखने के बावजूद भी आप अगर हमें ये कह रहे हो कि विदाउट रेफरेंस, ठीक है ना, कोई बात नहीं, पढ़ने तो पढ़ने के लिए हम ये गुजारिश करते हैं कि छोटे छोटे खंड उसके बनाकर समाज तक उसको पहुंचाना चाहिए, मगर संदर्भ सहित रहना ये जरूरी है. वो फर्स्ट कैटेगरी सही है. जो कुछ इतिहास आ रहा है वो संदर्भ के साथ ही आ रहा है. और यदि किसी के मन में डाउट भी आता है तो वो बाद में, मान लो कि कोई एक रेफरेंस मैं देता हूँ और वो रेफरेंस सामने वाले को लगता है कि नहीं गलत है,
तो वो प्रूव करने की जिम्मेदारी वो सामने वाले की है, न कि मेरी। हाँ, जब वो prove पवार कर सर, देगा- सॉरी थोड़ा टू सा- डिस्टर्ब यू, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। ओके, सॉरी। आई थिंक ये बात हम फिजिकली जब सेमिनार लेंगे तो बहुत अच्छे तरह से डिस्कस करेंगे। नाउ ओवर टू आवर टुडे चेयरपर्सन गुरु गोविंदर सिंह धमीजा सर, प्लीज काइंडली कंक्लूड एंड गिव योर चेयरपर्सन रिमार्क। यस, मैं आप सबको एक बार फिर बधाई देता हुआ, जिस हमारे दोस्त ने अभी क्वेश्चन पूछा है मैं उसका स्वागत करता हूं। और मैं पवार साहब से सहमत नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि जितना भी क्वेरी हमें मिलेंगी वो हमारा ज्ञान बढ़ाएंगी। जिनका हम जवाब दे पाएंगे हम देंगे, और जिनका जवाब हमसे नहीं बन पाएगा उसको हम खोजेंगे, खोज के देंगे। और इसमें इन सबका मदद भी लेंगे, क्योंकि हमारा अल्टीमेट विषय जो है ना, एम है, वो है कि हिस्ट्री को एक्सप्लोर करना है। हमने डिक्टेट नहीं करनी है हिस्ट्री, हमने हिस्ट्री को एक्सप्लोर करना है। तो मैं आपके बात का स्वागत करता हूं। और जब तक पूरी क्लास में एक दो बच्चे क्वेश्चन पूछने वाले नहीं हो, वो क्लास भी सोई हुई लगती है। तो मैं इस जागृत मेंबर को बधाई देता हूं, क्योंकि मुझे आज भी याद है बचपन में व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ स्कूल, तो आई वाज द ओनली पर्सन इन क्लास जो कुछ ना कुछ अपने टीचर से जरूर पूछता था, और मुझे बाद में लाइफ में वो चीज बहुत काम आई। तो मैं इनके स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं, और अश्योर करता हूं गगन जी वहां आएंगे, आप बढ़िया सेमिनार रखिए। आप गगन जी के साथ जब बैठेंगे तो मैं दावा करता हूं आपके सवाल, उनके जवाब, और उनके सवाल और आपके जवाब, वो 10 दिन कम से कम चलने वाले हैं, और बहुत अच्छा लगेगा आप सबको। 25 साल काम किया सर, 25 साल काम किया तो 10 दिन भी कम गिर जाएंगे। कोई बात नहीं, धीरे धीरे कभी आपको बुला लेंगे, कभी हम आ जाएंगे, कभी वेबिनार से, कभी 1-to-1 भी करवाएंगे। आपका गगन जी से 1-to-1 भी करवाएंगे, जिसमें छोटा एक रख लेंगे कॉन्फ्रेंस 4 आदमी का। प्रकाश जी होंगे, जयराम जी होंगे, गगन जी होंगे, आप होंगे। तो उसमें ऐसा ऐसा करते रहेंगे तो भी ये बेहतर चीज आएगा। मंथन करने से ही जो है रिजल्ट अच्छा आता है। वो माता जी जो दूध बिलोती हैं सुबह सुबह, कितना लस्सी को फड़काती है इधर से उधर, तब मक्खन निकलता है। तो मैं स्वागत करता हूं, और खासकर जागरूक जो लोग हैं उनका मैं ज्यादा स्वागत करता हूं। और आपने हरियाणा पंजाब बेसिक एकेडमी को जो मौका दिया है सेवा का, वो सदा तैयार रहेगी। आपका धन्यवाद करती है, आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। और मैं आशा करता हूं कि जब भी आप याद करेंगे केवल एक मेल डालेंगे, एक सेमिनार हमें रखना है। हाँ, डेट मैं चाहूंगा उसमें एक की बजाय भी 2 लिखें। कई बार एकेडमी का पैरेलल कोई और इंपॉर्टेंट प्रोग्राम उस डेट को होता है, या डेट आप ओरली कंफर्म कर सकते हैं, पर जब भी आप चाहेंगे तभी प्रोग्राम आपको तुरंत दिया जाएगा। ऐसा मेरा है आपके साथ विश्वास। आपका बहुत धन्यवाद सबका। Thank you very much, sir, for giving your valuable chairperson remark for this today's seminar. So now over to Dr. Narayan Bhosle, sir, for giving today's seminar's vote of thanks. Narayan Bhosle, sir. Hello. Bhosle, sir, is here. Hello. Hello. No, Bhosle, sir. Okay. I think sir not is here. So, yes, Bhosle, sir. I'm audible. you hear me? आप हाँ, आपका आवाज आ रहा है. Please kindly give the vote of thanks of today's seminar, sir. Okay, Yes. okay, sir. Good evening, all in one. I am here for the giving a vote of thanks. Guru Govind Singh Endowment Chair, Department of History, University of Mumbai, in collaboration with the Haryana Punjab Sahitya Academy, Government of Haryana, organized this national e-seminar on the role of Banjara in the Sikhism. Thanks to Mr. Jairam Sitaram Pawar, Deputy Collector, Government of Maharashtra, Mr. Gagandeep Singh, State Officer from Land Acquisition Collector, Panchkula, Haryana, for their insightful participation in this e-seminar. I also thanks to Dr.
Gurvinder Singh Dhamija, Deputy Chairperson, Haryana Punjab Sahitya Academy, for taking the position as a chairperson for the e-seminar and for this valuable guidance. Thanks to our colleagues, Dr. Manjiri Kamath Madam, Nita Madam, Sandesh Sir, Lakshmi Madam, Anga Madam, Rishma Madam, and Sushil Sir, and also our HOD, Dr. Prakash Masram Sir, from our History Department, for this online e-seminar. Some professors from the University Department and affiliated colleges of the Mumbai University were also present. Thanks to them too. Some 112 research students of MA and PhD and other universities, some professors also present. Thanks to them. Thanks to our non-teaching staff, Rupesh, Asmita, Purjekar from our department. After this e-seminar, or with the permission of chairperson, thanks. Thank you, sir. Thank you very much. And sir, once again, I am very much grateful and thankful to you, Honorable Deputy Chairman Gurvinder Singh Dhamija, sir, for giving your very, very valuable time. I know, sir, you are now staying in America, and I think at the very early morning you joined this seminar. So I am very much grateful and thankful to you, sir, for your great efforts. And within a short period, you accepted our invitation and also collaboration for organizing such a very important and valuable seminar. And also I am very much thankful to Pawar sir, Dr. Pawar sir, for giving very valuable suggestion, and Gagandeep sir for giving also his valuable remark or highlight on the today's topic. And also I am thankful to all delegates, all respected professor from department history, from university department, from affiliated college, and my dear all the student, PhD student, PG student, for joining this seminar. Yes. So with this word, with the permission of today's chairperson, I will end this seminar. And thank you once again to all the delegates. Okay, sir. Bye bye. बाय बाय जी, बाय बाय। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और प्रकाश जी, मेरा मुख्यमंत्री बहुत अच्छा है, मेरे को जो आपने अभी बता दिया यूएसए वाला, तो हमारा मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि आपका डिपार्टमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन देखिए और जो इसमें लिखा है कीजिए, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है पंजाबी का प्रचार और प्रसार के लिए केवल हरियाणा ही नहीं, हरियाणा के बाहर भी आप कहीं भी जाकर कर सकते हैं। तो उसी उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया हुआ है हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी, जो खुद टेनेंट है बाबा बंदा सिंह बहादुर के और ये बंजारा समाज के साथ जुड़े हुए हैं, और उन्होंने बहुत सा हमको काम करने का जो है प्यार भी दिया है और हमको आशीर्वाद भी दिया है। तो उसी नाते हम केवल हरियाणा में नहीं, हमने पंजाब में और देन दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, हर जगह सेमिनार किए हैं। और मैं विदेशों में भी, कनाडा का ईस्टर्न वेस्टर्न, यूएसए का ईस्टर्न वेस्टर्न, सेंट्रल, सभी, अभी भी मेरा कल एक प्रोग्राम कैलिफोर्निया में था, और अभी एक जो है कॉन्फ्रेंस है 1 और 2 अक्टूबर को सरी वैंकूवर में, पंजाब भवन में। उसके बाद एक सैन फ्रांसिस्को में 15 अक्टूबर को एक बहुत बड़ा सेमिनार है, और देन एक ब्रॉम्पटन में है 20 अक्टूबर को। तो ये सभी अटेंड करने के लिए मैं यहाँ आया हुआ हूँ। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री बहुत बड़े दिल वाले हैं, वो कहते हैं भी कोई भी सीमाएं, कोई भी बाउंड्रीज जो हैं वो हमारे आड़े नहीं आनी चाहिए। तो देयर शुड बी अ बाउंड्रीलेस वर्ल्ड, जो कि बेगमपुरा कंसेप्ट गुरु नानक साहब कहते हैं कि बगैर बाउंड्री के दुनिया होनी चाहिए।
तो मैं एक बार फिर आप सबका प्यार और स्वागत करता हूँ और आपको अश्योर करता हूँ कि एकेडमी धन्यवाद सर। हर समय आपके साथ खड़ी है, हर समय।